Hello. Hello. Uh, Hello, Panikai sir. Hello. Yes, ma'am. हाँ, sir मैं Panikai sir class start कर दो कमी ये तो कितने ना Yes, ma'am. Shall we start now? Yes, ma'am. Sure. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Let's start. Good evening all. So in our last class we were discussing the definition. This is social cognition and attribution theory. We will discuss later. First, we'll start with the methods that was incomplete. So my screen is visible now. मैडम नमस्कार Yes, मैडम And yes, ma'am. Yes, ma'am. so, मैडम गोटे क्वेश्चन थला मैडम हेलो what's the definition of social psychology? What's also psycho? Hello, hello. मैडम गोटे क्वेश्चन थला मैडम हाँ. मैडम काली नेटवर्क प्रॉब्लम सकाशे मो डिस्कनेक्शन हे गला तापर कनेक्ट कला को हे पाइलानी प्लीज टिके आंसर नहीं सेठी भाई मु पानी भाई सर को खोजुची जे कौन करा जाय परिबो बोली लेट रे मैडम बेले बेले नेटवर्क प्रॉब्लम सकाशे कटि जाउछ तो तापर कनेक्शन कला को होउनी हाँ आपण जहाँ कहते ठीक किंतु गोटे थर आपण जदि एंटर करिसंती कनेक्टेड हे जाइसंती ताहले तापरे पुनी आउ थरे एंटर करिवारे विशेष असुविधा हुएनी प्रथम नहीं थर मैडम जॉइनिंग काली ହେଲା मैडम ଆପଣ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ସେ मैडम काली मु फर्स्ट टाइम जॉइन करथेली ହଁ ତାପରେ ହେଲାନି ଆପଣ तापर କହୁଛନ୍ତି जो नेटवर्क प्रॉब्लम सकाशे कटि गला डिस्कनेक्शन हे गला ହଉ तापर देखा को जॉइन कला को हेलानी ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି ପଚାରିଦେଉଛି आज्ञा मैडम ହଁ ସାର୍
हेलो Yes, ma'am. हाँ ma'am. अच्छा सार कहले जे जो इनविटेशन टा देई ना हंती की सुनुचंती जो माने जॉइन करि पार नथिले काली जो जॉइन करि पार नथिले अर्थ रिजॉइन करि पार नथिले जो माने हेलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जो माने काली जो मानकर इश्यू थिला जे थरे डिस्कनेक्टेड हेछि आ जॉइन करि पार नथिले बोली सानकर कहवा अनुसार से माने जो इनविटेशन दिया है से माने को एक्चुअली एडमिट करिवार कोनोसी आवश्यकता नहीं से इनविटेशन को क्लिक कला माने से माने ऑटोमेटिकली जॉइन हे जिवे आउ जदि से माने रीजॉइन करि पार नाहंती थरे जॉइन कला पर ताहले किछि अलगा टेक्निकल इश्यू से मान को देखिबो ताने थरे जे जॉइन करिछि डिस्कनेक्टेड होला पर भी से रीजॉइन करि पारिबो कोनोसी असुविधा नहीं इवन से जो फर्स्ट जॉइनिंग टा भी एडमिट करिवार आवश्यकता पड़नी काहे ना आपण माने जो इनविटेशन टा अछि ताको क्लिक करले जॉइन कर पारिबो बुझी पारले आपण की जने कहूथिले यस मैडम काली मु करथिली मैडम बाकी हेलानी को हाँ हाँ किछि कोटे सेही मैम मो टेक्निकल भी ट्राई करी बट मोर टोटली जॉइन ही हेलानी माने स्टार्टिंग हाँ से माने पळौचंती 6टा सुधा सेति पई कि आपनकर ग्रुप रे लेखि दियंतु जे 6टा सुधा समस्त एटलीस्ट जॉइन हे जिवे मझी रे आसी कि जॉइन होला अलको काल तो समस्त जॉइन करथिले मते लागुची बहुत मैडम 6टा भितर हम जॉइन करचलु हाँ हेले हाँ ठीक मझी रे कटि गला 6:40 पाखापाखि हम कटिगला तापर हम जेते ट्राई कलु तापर हेलानी हाँ आपनकर सांग माने जणीले जे मैडम एमितिया होउची बोली कहिछि किंतु आउ जेहेतु मोर असुविधा बोली ए टाइमिंग टा रखा जाइछि से माने टाइम रखिथिले ही 4टा रु 6टा आपण मानकर असुविधा हबनी तांकर असुविधा हबनी किंतु मु से टाइम से तो मैच करि पारलिनी बोली ए टाइम टा को एमितिया कराला आउ गोटे जिंस भी सर कहले जे एउडा सब रेकॉर्डिंग करा जाउची आपण माने किछि व्यस्त होबार दरकार नै जदी मिस करचंती कोनोसी प्रकार रिक्वेस्ट करले सर देबे तो सेया भी कहचंती तो समस्त चेष्टा करंतु जॉइन करिया पई क्लास अटेंड करिया पई जदी फेल होचंती ताहले हमें सेटु क्लास को पुनी थरे दबा की जा करिया तो काली हमें डिस्कस करथिलो व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी की जणे कहंतु सोशल साइकोलॉजी एग्जैक्ट डेफिनेशन न कहले भी व्हाट यू हैव लर्नड इन द लास्ट क्लास सेटु जणंतु सुजीत की अछंती से टिके म्यूट करंतु हां अब कहंतु टिके डेफिनेशन ता कहंतु आगे बाने व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी Social psychology is the scientific study of how people think about others how in our people society. think about others this can be one of the definition or we say how people behave how people experience what are the mental processes that take place within an individual when he is in a social situation jota ame kahuchanti social situation can be one to one interaction or some others are present or some interaction is going between two people or we can say when someone is surrounded by a number of people or he is within a group or group to group interaction को भी हमें social situation बोली कही so social psychology is a combination of sociology where we should study the society where we study the individual in the social situation एया होची हमर social psychology रा definition काली बहुत सुधा समय विषय जाईची आउ ताकू विशेष रिपीट करि परिबानी then coming to the methods that are used in social psychology we had already discussed about the observational method रे हम कोन डिस्कस करथिले मने रखछन कि कहि देबे कहीं भी नहीं कौन पॉइंट्स डिस्कस करथिले व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड्स
Controlled observation, naturalistic observation. Out. What is observation? Then the process of or the stages of observation. So it starts with describing the behavior, and once we describe the behavior, we try to find out the causation or cause and effect relation that is there in the whole scenario or whole event. Then different types of observation methods we had already also discussed. That is, one is controlled observation, another one is naturalistic observation, or we can say that naturalistic observation and the opposite of naturalistic is controlled observation. Natural observation refers to the observation that where the observer records the facts, the behavior, the events, of the records all the thing, behavior, event that occurs in a natural situation, or there is a spontaneity of these behaviors. But in controlled observation, the observer records all these things in a controlled situation. Artificial situation is created and the subject is put in that artificial situation, and then his behavior activities are observed. Control. Another one is participant observation and one is non-participant. In participant observation, the observer participate or he or she is a part of the observation. But in non-participant observation, the observer stays away from the social situation or where the event is actually happening, and he observes from a distance or he keeps himself or herself out of the situation. Then we discussed about the advantages, disadvantages, simple, direct, greater accuracy, records natural behavior, independent of people's willingness to report, is a universal method. And for some studies, it is the only option, or this is the only method of studying some behavior. Other methods cannot be used to study behavior. So we can say these are the advantages, whereas the disadvantages include some phenomena cannot be studied using this method or this technique, and as there is observer's bias, this method is less reliable and validity check is required, because less reliability always leads to less validity. So validity checks should be done. Then it's a very slow process, and we can say that it is an inadequate method, and or it requires other methods to assist it to make it fulfill. Then it is an expensive method because it takes time and years. The next we discussed this correlational method, where we study the relationship between two variables, and that is recorded or that is mentioned in terms of correlation coefficient. There are different types of correlation, Pearson's correlation, rank order correlation, but we use the term R for mentioning correlation, and the quantity lies between or the number or the correlation can be between -1 to +1. That means some +1 refers to high positive or highest positive correlation, whereas -1 refers to highest negative correlation. And what is positive negative correlation? Positive correlation is one where the change in one variable leads to change in the other variable, but increase in one variable leads to increase in the other variable, or decrease in one leads correlated with decrease in the other variable. That means both the variables go in one direction. But in case of negative correlation, if one increases, then the other one decreases. ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା good rain ହେଲା ଆଉ good ଫସଲ ହେଲା, ଯେତେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେ ହଉଛି ସେତେ ଭଲ ଆମର ଫସଲ yield ହଉଛି. Then these two are positively correlated. କିନ୍ତୁ after a particular limit, ଯଦି ବର୍ଷାର ମାନେ ଅତି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, then also there is flood and all these things, ଆଉ ଫସଲ ଯାହା ବି ହେଇଥାନ୍ତା ସେଟା କମି ଯାଉଛି. ତ
very heavy rain is associated with bad decrease in the crop yield. So एविटा negatively related. अति वर्षा बढ़िबा सहित crop yield टा कमी जाउची. This can be said as negative correlation. Spending more time on studies is positively correlated with good scholastic achievement or good marks in that class. ମୁଁ ଯଦି ବହୁତ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପଢିଲି ତାହେଲେ ମୋର ଡେଫିନେଟଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ ଟା ଭଲ ଆସିବ. ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି କମ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପଢିଲି କମ ଟାଇମ ଦେଲି ମୋର ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ ଟା କମ ଆସିବ. କିନ୍ତୁ this is called as positive correlation. ये बढ़िले सिए बढ़ुची सिए बढ़िले सिए कमिले ये भी कमुची. एटा पॉजिटिव कहबा किंतु गोटे बढ़ुथिबो आरटा कमुथिबो ताहले आमे ताकू नेगेटिव कोरिलेशन बोली कहि परिया. आ गोटे जीरो कोरिलेशन भी अछि. कोरिलेशन नेवर implies any causation. सेटा भी गोटे ये अछि. Then we also discuss this experimental method. Experimental method रे different types of experimental methods are there. Two experimental, laboratory, field and natural experiment. Here we discuss these terms. I don't want to repeat it again. It's there in your book and you can go through it. The main two terms or three terms that are there is independent variable, dependent variable, randomization. All these things are there. Independent variable is the cause, whereas dependent variable is the effect, and some variables are there that should be controlled to get a good, valid and reliable result. Those are called control variable. Hypothesis is the statement about the result of the experiment. Then confounding all these things are there. Another concept in experimentation is random allocation or randomization. The subjects are randomly allocated to different groups or two different experimental and control groups. They cannot, if we choose, suppose we want to know the effect of intelligence on scholastic achievement, so we have to take intelligent people in one group and people having less intelligence in other group. किंतु इंटेलिजेंस नबा सहित आमे आउ तार जो अलग जिंस को रैंडमली जदि से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को असाइन करना है या कंट्रोल ग्रुप को असाइन एथरे दीटा ग्रुप दीटा आपे आपे इंटेलिजेंस रे डिवाइड हे गेलो. वन इज this intelligence is independent variable ଆଉ ତାଙ୍କର scholastic achievement ଟା dependent variable ହବ. ଆଉ ସେଠି random allocation group ରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର. ମାନେ नहले गोटे साइडेड ये ହେଇଯିବ. Then what are the steps? एटा हमें करथिले. Starting with the research question or research problem. Most of you had said or discussed or thought about a research problem or question. Then you yourself formulated some hypothesis. You also designed your experiment. Then data, how to collect data, how to analyze data, then preparing report and publication. These are the stages of experimental method. Then about the validity. गोटे जिंस आमे टेस्ट करूचंती इंटेलिजेंस जानिबा पई कि जदि इंटेलिजेंस टेस्ट टा इंटेलिजेंस जानि पारुनी ताहले we cannot call it a valid test. आमे घंटा टा आनिचंती आम काथरे लगेले जे से घंटा हमको टाइम देखबो देखला से घंटा हमको टाइम देखो नहीं कि टेम्परेचर कोन ओरे देखेला. Then we cannot call it a valid thing. आमे ताको घंटा बोली ही ना देई परिबानी. सेंती इंटेलिजेंस खाली जेंती आपण माने भी जणे कहले मैडम सी सब इंटेलिजेंस टेस्ट करले आमे से से भलो मार्क रखिला किंतु देखला स्कॉलस्टिक अचीवमेंट तार कम रहउची. सेति कि इंटेलिजेंस टेस्ट जदि नै चंती से तार इंटेलिजेंस ही मापुथिबो. इंटेलिजेंस टेस्ट तार खाली इंग्लिश नॉलेज मापुथिबो सेमते हेले दैट इज नॉट ए वैलिड टेस्ट. तो सेही जो सेमिति जदि सेही टेस्ट cannot valid experiment valid आमे सेही टेस्ट नै कोटे एक्सपेरिमेंट करले that cannot be called as a valid experiment. So एई सब जिंस गुडाको these are the things that interfere or these are the things that are threat to the validity of any experiment or any experimental research. सेटले गोटे होची confounding variables, गोटे social desirability. Suppose we are doing an experiment
on your attitude towards dowry, so you will definitely respond in a negative manner towards dowry. Nobody will say that I am for dowry or I have a positive attitude towards dowry because of this social desirability factor. So this will, your experiment cannot be a valid experiment. The demand characteristic and the experimental expectancy effect, experimental je karuchi tar expectancy bhi, that also influence the behavior of the subject who is under study. So how to minimize this effect or this how to minimize the threat to validity? Post experimental inquiry, ଆମେ experiment ସରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରି ପାରିବା, ଟିକେ ତା ସହିତ ସେ ବିଷୟରେ discuss କରିକି we can get a brief idea about whether the result or whether the behavior, whether the response that is being shown by the subject is valid or not. That can be done by post experimental inquiry. ताको बहुत समय रे हमको आमे ताको debriefing बोली भी कहउछन, से विषय भी आपण मानकु कहि आउ टिके समय पर. Then unobtrusive measures, then cover story, एटा जो आमे experimental bias कहिले बा subjective bias एटा कहिले बा social desirability effect, आमे कोन पई कि कहि दउछन काहे ना आमे जानि देले जे हमर attitude towards dowry टेस्ट करा होची कि ताकू मेजर करा होची कि ताकू असेस करा होची. If I answer in that way, I will be criticized by others. That's why I will start answering in a social desirable way. सेइति पई कि जदी गोटे कवर स्टोरी करा जिवो जोथिरे कि हम सब्जेक्ट जानि परिबनी जे से तार कोन कोन पई कि ए जो ताकू इंटरव्यू करा जाउची कि से को क्वेश्चनर को रेस्पोंड करूची, ताहले भी बहुत परिमाण रे this can be done or this can be helpful in reducing the threat to validity. Experimenters expectancy को कमेଇବା ପାଇଁ कि double blind experiment करा जाई परिबो. Those who are in the field of pharmaceutical or pharmacology, they must be knowing what is single blind experiment, what is double blind experiment. Acha, during the period of COVID, most of the vaccines were tested. All of you must be aware about that. Most of the vaccines were tested. So during that period, a term double blind, single blind experiments are used. The experiments are done to test the efficacy of the medicines or vaccines. These terms were all used during that period. Single blind way, only the subjects or the sample or on whom the experiment is done, they are not at all aware about the experiment. They, a cover story is made and they are made unaware about the purpose of the experiment. थरे जदि हमें अच्छा आपण माने को कोहा होची ए जो क्लास का आपण माने करूचंती, you don't know whether you are a part of this experiment. जे एथिरे एक्चुअली आपण माने क्लास करू नाहंती, आपण माने को ऊपर गोटे एक्सपेरिमेंट करा जाउची और you are being evaluated for your final marks. एटा जदि आपण जानि देबे जे केते जण पिला प्रेजेंट अछंती, सेमानकर से हिसाब रे फाइनल मार्क ता दिया जिवो, जते केते पिला इंटरैक्ट करूचंती से हिसाब रे फाइनल मार्क दिया जिवो. सेटा जदि जणी दिया जाउची आपण माननकु, ताहले you will start interacting, you will start showing interest, you will be very attentive in the class and you will try to get positively evaluated. किंतु आपण मानकु जेतरा पर्यंत जणा ही दिया जाउ नाही जे एगुला सब आपण मानकर फाइनल मार्क परीक्षा दिया जिवो याकु देखि मार्क, ताहले आपण माने चुपचाप क्लास रे सुनिबे. You are not bothered about interacting in the class, you are not bothered about how to show that you are being attentive in the class. So जते बेले आपण माने जानि दउचंती जे एक्सपेरिमेंट होची त आपण मानकर बिहेवियर अलगा होची, जते बेले जानु नाहंती जे एक्सपेरिमेंट होची आपण मानकर बिहेवियर नेचुरल बिहेवियर का आपण माने शो करूचंती. So here in single blind, the subject actually doesn't know, or the subjects actually do not know that they are a part of the experiment. In double blind,
एक्सपेरिमेंटर्स एक्सपेक्टेंसी जोटा आमे पढ़िले एक्सपेरिमेंटर भी ए प्रकार व्यवहार देखैबो जे जन को प्लास्टिको दिया होची जन को इंजेक्शन दिया होची एक्सपेरिमेंटर भी जानि छी जे याको प्लास्टिको दिया होची याको इंजेक्शन दिया होची एक्सपेरिमेंटर जतरा ताको वैक्सीन दउथिबो सेतरा तार व्यवहार रे ए प्रकार देखैबो जे तार सब्जेक्ट जानि लेबो एंड अकॉर्डिंगली सीए व्यवहार करिवो बा से वैक्सीन को रेस्पोंड करिवो द एक्सपेरिमेंटर भी से प्रकार रेकॉर्ड करिवो जे वैक्सीन जे नेइची तार इंप्रूवमेंट केमिति होची सो एटा होची एक्सपेरिमेंटर्स एक्सपेक्टेंसी तो एक्सपेरिमेंटर और सब्जेक्ट रो एक्सपेक्टेंसी को कंट्रोल करिवा पाइन की डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट्स हुए those who are interested to know about this they can go to this concept of epidemiological research ठीक अछि epidemiological research को जाइके अपन माने अन्य सब रिसर्च सिंगल डबल ब्लाइंड अछि डबल ब्लाइंड रे एक्सपेरिमेंटर भी जानिबनी सब्जेक्ट भी जानिबनी आउ गोटे थर्ड पर्सन थिबो जे कि ए जो कोटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आउ कोटा कंट्रोल वेरिएबल से भीतर सी तार मैनिपुलेशन करके देखिबो सी ही जानिबो जे याको एक्चुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सपोज कराइछि ताकू करा जाई नाही सब सेरे एक्सपेरिमेंटर एक्सपेक्टेंसी रबी कोनोसी प्रभाव हेई परिबो नाही तो जहार अधिक जानिया टाइम की इच्छा अछि they can go to this epidemiological research or you can go to this double single blind concept in Google and know more about it these are the advantages disadvantages kali ame kotha hi heithile this one is very objective and there is little scope for experimenters bias once a test or the result of one experiment will be found we will find the same result if we do the experiment again and again seta bhi this is the best way to gather information into experimental method that cannot be used for some phenomena jota ki jemti mu kali kahithile example gote accident jetale hochi setebele the people show some type of behavior तो से एटा कोन शेड्यूल टाइम देख सरी गला बोली कहूची ये तो ठीक अछि कोन कहउथिली हां एक्सीडेंट बिहेवियर टाको आमे जदी स्टडी करिबा और पीपल हु इज फेसिंग द विक्टिम ऑफ द एक्सीडेंट और द बाइस्टैंडर पीपल हु आर अराउंड द एक्सीडेंट तो आमे ताको एक्सपेरिमेंटल मेथड रे केबे भी करिबाटा संभव हेबो नाही काइना आमे गोटे एटा अनएथिकल हबो जे गोटे एक्सीडेंट क्रिएट करिया पई सेटा को आमे करिया को हेले गोटे वीडियो क्लिप ते देखेबा जे लोकंकर बाइस्टैंडर मानकर कोन रिएक्शन होउची बोली किंतु एक्चुअल विक्टिम ऊपर जदी किछि आपण माने ए जो यूक्रेन वार चालीची ए वार से वार चालीची सपोज यू वांट टू नो the psychology of the people who are under this war or who are suffering in this war सेमानकर जानिया पई कोन आपण गोटे एक्सपेरिमेंटल मेथड करि परिबे कि एक्सपेरिमेंट करके सेटा जानि परिबे नाही that can only be done by observation method so in some cases experimental method cannot be used so these are the three methods then we will discuss about ethnographic ethnography is a Greek word ethno means folk or people जो ग्रीक वर्ड एथनोस तार अर्थ होची people बा folk or a group of people whereas graphia is graphia means writing when we are writing about people when we are documenting about people when we are observing and writing about people it is known as ethnographic method and this is the most powerful method in social psychology then in sociology khali social psychology this method has been borrowed from sociology ethnographic method where if you are interested you can search about this method and famous ethnographic studies बहुत गुड़ा जगह रे आपण माने सुनी थिबे even in our culture also in our Odisha also there Odisha has around 64 or how many tribal communities in how many tribal communities are there in Odisha कि अछंती एंथ्रोपोलॉजी रो कि तार इंटरेस्ट अछि कि ए विषय रे
ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ? yes or no, you can answer as yes or no also. yes madam, yes Yes, madam, ma'am. yes madam. ଆଇଡିଆ ଅଛି କିଛି? ଯିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କଲେ କହିପାରିବେ। ରାଧା ଅଗ୍ରୱାଲ, do you हाँ have any मैडम idea? ହଁ मु आगु पीएससी देला बेले मोर गुटे हाँ सब्जेक्ट थिला एंथ्रोपोलॉजी तो anthropology मु ଥିଲା। एंथ्रोपोलॉजी से कॉम्पिटिटिव वे रे पढ़ी थिली सेटा ହଁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି? ट्राइबल कम्युनिटी स्टेट वाइज रीजन वाइज ଆମର डिफरेंट ପାଇଁ डिफरेंट थांती और ଆମର ପାଇଁ मोर ओवरऑल इंडिया माने उड़ीसा रे ହଁ तो ହଁ अबाउट 60 वैरायटीज ऑफ ହଁ ट्राइबल्स रहंती सेथरे गोंड कंध ହଁ ମୁଁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଯଦିଓ କହିପାରୁନି ନା କେତେ ଜଣ ଥିବ, ମୋର କାହିଁକି 64 କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମତେ ଲାଗୁଛି 64 ଟ୍ରାଇବ୍ସ अछंती ଯାହାବି। ଆଚ୍ଛା अबाउट 60 ଆମେ एटी उड़ीसा रे अछंती 70 ଆମର अराउंड ଟ୍ରାଇବାଲ କୋଟା ଅନଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ड ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପଲ କୋଉମାନେ? pardon unexplored ମାନେ they are not being influenced by this modernization or anything, କୋଉମାନେ? सेटा କୋଉ गुटे ଟ୍ରାଇବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା? बंडा ट्राइब मैम बंडा ବଣ୍ଡା बंडा ଟ୍ରାଇବ। ସେମାନେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ବଣ୍ଡା ମାନେ? मालकानगिरी ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ସେଇ ରିଜନ ରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, they are not being influenced by the outside world ବୋଲି ଆମେ assume। इन्फ्लुएंस्ड बिट मैडम किंतु एबे मीडिया जत्ते हाइलाइट करलानी आ ଆଉ से ଏବେ जब ନାହିଁ। हाइया लोक पहुंचलेनी बट से ତଥାପି मनी भी ଅନ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଟି ଅପେକ୍ଷା एमाने ଟିକେ हां ଅନଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ଡ इनमें ଆଉ माने ଏମାନେ ଟିକେ ज्ञान सारी नाहंती किंतु isolated ଟିକେ ଅଛନ୍ତି। Suppose I आइसोलेटेड want to know about the Bonda tribe, Bonda community, ଆମେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ difficult ମାନେ ମୁଁ ମାଲକାନଗିରି ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖରେ ମୁଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, and I want to explain you this ethnographic method, ସେଇଟା ଖାଲି ବୁଝଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। Suppose I want to know the marriage system of Puri Brahmins, ସବୁ community ର marriage rituals ଗୁଡାକ different ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ କଲଚର। ତ ମତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପୁରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର, ଦେ ଆର୍ ଭେରି strict, they are very rigid about their rituals, their culture and all these things। ଆମେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ପୁରୀର ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ ଅଛନ୍ତି और ପୁରୀ ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ଘରେ ବାହାଘର କେମିତିଆ ହଉଛି। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଉ ଏଇଠି ବସିକି ପୁରୀ ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ 2-4 ଜଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦେଇକି ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ହଉଛି, ଓହୋ ଏଇଆ ହଉଛି, ହଁ ହଁ ଏମିତି ତାପରେ ଏଇଆ ହୁଏ, ସେଇଟା ରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ ଗ୍ୟାଦର କରିବି ତାଠୁ ବେଟର ୱେ କଣ ହବ? पार्टिसिपेट करिवो ମୁଁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବାହାଘରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବି। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଇ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ମ୍ୟାରେଜ ଇଜ ଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ସେଇ ମ୍ୟାରେଜ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ଯଦି ଯିବି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ପାଇଁ, I have to gain their confidence, I should beg for access into their marriage, I have to a part of their community, part of this celebration, part of this function, so that I can get a clear picture, ଏମିତି ହଉଛି ସେମିତି ହଉଛି ତାପରେ ସେମିତି ହଉଛି ତାପରେ ଏମିତିଆ ହଉଛି, ଏଇଆ କହିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମ୍ୟାରେଜ ରିଚୁଆଲ୍ସ, ପୁରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମ୍ୟାରେଜ କଲଚର ବୋଲି କହିକି ଗୋଟେ ବହିଟେ ପବ୍ଲିଶ କରିପାରିବି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ଫିଲ୍ମଟା ନୂଆ, ଏଇ ଯୋଉ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ, ତାକୁ ଏଇ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡିଥିବ ଭାବି କୁହନ୍ତୁ, ରିସେଣ୍ଟ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମଟା। ଜାଣିନି ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଓଡିଆ ପିକ୍ଚର ଦେଖିନି କେବେ ବି। ହଁ ଏତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ କହିପାରିବନି? ମାଲ୍ୟଗିରି ମାଲ୍ୟଗିରିଟା କଣ କି? ମୁଁ ସେଟା ପୁରା ଦେଖିନି, ତା ପୂର୍ବଟା କୁହ। ଦମନ ଦମନ ମ୍ୟାଡାମ। ଦମନ ଦମନଟା ଛାଡିଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣ କହିଲେ पुष्करा मैम। ପୁଷ୍କରା। ପୁଷ୍କରା उसका ठीक। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡିଥିବ ସବ୍ୟସାଚୀକୁ। ଫିଲ୍ମର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ସବ୍ୟସାଚୀ ବୋଧେ ନିଜେ, ନା ନାହିଁ? ଏତେ ଇନଫର୍ମେସନ ରଖିନାହାନ୍ତି କି? ସବ୍ୟସାଚୀ ମ୍ୟାଡାମ। ସବ୍ୟସାଚୀ ତ ଆକ୍ଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ସବ୍ୟସାଚୀ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସବ୍ୟସାଚୀ ଯୋଉ ଗାଡି ରଖିକି ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଯାହା ଅଛି, ସିଏ ଏମିତି ଆସିଥିଲା ବାଣୀ ବିହାରକୁ ତାର ପବ୍ଲିସିଟି କରିବା ପାଇଁ କି,
सी जो परमिशन नवा पे आसथिला सेतळको ही आमे जाई पहुंचलु रेजिडेंट ऑफिस रे तासे तो फोटो दे उठेली कोन पे आमे तो देखि चिनी परलुनी टिके समय पर रियलाइज कलु सदस्य अछि बोले सी फोटो टे उठाया तो उठेलु सी तार एक्सपीरियंस 5-7 धारी रे कहला सेइथु मु जहा ऑब्जर्व कली he had done a lot of ethnographic study to do this film or to shoot this film पुष्करा होची आम कल्चर रे गोटे पार्ट पुष्करा समस्त पुष्करा जोटा हमें कहउछन सेटा कोन कहउछन एक्चुअली हमें यास्मीन बेगम राधा अग्रवाल पुष्कर मैडम मु एक्चुअली उड़िया एते जानिनी मैडम मु सेति पई ओडिया माने टिके ओडिया पिला माने कोन टिके रेस्पोंड कर सुनुछन कि ना नाही क्लास रे बर्तमान पुष्कर माने आज्ञा मैडम आज्ञा मैडम माने आपण माने ए पाठरे एमिति किछि नाही जे जोटा मु कहिबी आपण माने सुनिबे आपण माने डिस्कस करिकि एटा ओहो एया एया कि हम सोशल साइकोलॉजी माने कोन हमर लाइफ सहित रिलेटेड है नाही हमर लाइफ रे ए जिंसोडा को केमिति होछि ता बिहाइंड कोन थियोरीज अछि तार ऊपर केमिति रिसर्च करा जाउछि ता ऊपर रिसर्च केमिति करा जिवो ताके केमिति स्टडी करा जिवो हां को मैम मु भाबुजी जो मनीष मरला परे मैम मु भाबुजी जो मनीष मरला परे ए बिरो केते छाय वर्तमान 26 जण अछन पुष्करा देखिछन केते जण नहीं मैडम देखी देखिनो मैडम देखा नो मैडम देखि जी देखिछन कोन आग जणे के रेस्पोंड करले देखिछि बोले कोन पुष्करा माने कोन मैम एक्चुअली जो हम एक्चुअली कहते जो मरी गला पर जो मानन को पुष्कर दोष लागे सेई दोषटा को माने खंडन करिया पयगा से जो गोटे पुष्कर पूजा बोली करा जाए सेई पूजा रे से सेटा को ये करछन करके फिल्म है हां मैम पुष्कर हमरो ओडिया हां हां कोन मैम पुष्कर अच्छा सेटा ही हम पर डिस्कस करछली शुभ लक्ष्मी का शुभ दर्शन बनिले जा के जहा कहलु सेया ही से फिल्मटा हम ओडिया कल्चर रे मु जानिनी अन्य हम कल्चर अनुसार गोटे समय रे मले जेमति कहंदी शुक्रवार की को बार गोटे मले पुष्कर दोष लागे मंगलवार शनिवार अमावास्या रे मले जो दोषटा लागे सेटा होची पुष्कर कहा जाए हां सेई पुष्कर दोष को खंडन करिया पयगा पुष्कर आज्ञा मैम क्या कहू पुष्कर दोष आज्ञा आम कल्चर रे भी अछि जे आमे से पुष्कर दोष ताकू छडेइबु केमितिया मैम गोटा ब्राह्मण आसी की तार पूजा पूजा करे माने रीजन वाइज वैरी करबो एटा नोंते तापर सब जगह रे सेम नो मैम कोटी तार रिचुअल अलग थाए सपोज आई वांट टू नो अबाउट दैट पुष्कर कि जे सब्यसाची जो कला फिल्मटा जे गोटे रेगुलर लिटरेचर रिव्यू माने जे कोन से फिल्मटा कला आको ता ऊपर गोटे रिसर्च ताको एक्चुअली करिया को पड़िबो मु करबी गोटे फिल्मटा मते ता ऊपर प्रॉपर रिसर्च करिया को पड़िबो जे सेही जदि हम कहली पूरी ब्राह्मण को बाहागर पूरी ब्राह्मण को गेटअप कोन पूरी ब्राह्मण माने बाहा हला आज काल तो घागरा पिंधुचंदी पूरी ब्राह्मण माने भितरे की अछंती कि पूरी ब्राह्मण मैम पूरी ब्राह्मण घागरा पिंधंदिनी सेबा से माने केबे भी घागरा पिंधिबे बोली हमें भाबी परिबा नाही बिकॉज़ दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स इन देयर रिचुअल्स दे आर वेरी रिजिड इन फॉलोइंग देयर रिचुअल्स तो केबे भी पिंधु नथिबे से माने सब जिंस जो मॉडर्न जिंस उडा तो से माने करनो मु मैम से माने पाट पिंधंदी पाट पिंधंदी सेटा पुनी माने हमर ओडिसा का पाट ही पिंधुतिबे स्वतंत्र जो तंत बुणा पाट से बाहर को से को ही पिंधंदी तो एई सब हमें जो डिस्कस करूचंती एते पुष्करा हो बा माने सेटा खराब जिंस बिचरे डिस्कस करचंती एटा शुभ जिंस शुभ अशुभ हम कल्चर रे अछि तो हमें एटा जो डिस्कस एति गुडा करिले हमें एक्चुअली we are assuming from outside जे एमिति होथिबो सेमिति से माने तो एते बिलीव करथि से माने कोन घागरा पिंथिबे नाही से माने पाट पिंथिबे ता भितर आपनकर आईडिया अछि जनकर से कहि देले कि नाही माने एमिति अछि माने बुणा माने जोटा को हैंडलूम पाट ही से माने पिंधुचंदी एमिति नुह जे बनारसी कांजीवरम भिटिबको जा देला माने भी से माने पिंधिबेनी से माने एटा हमर ओडिया ओवन साड़ी ही पिंधुचंदी तो if I want to know about them if I want to know about the Bonda tribe
then I have to enter into their culture. I have to stay with them for few days. ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ ଷ୍ଟଡି। ଏଥନୋଗ୍ରାଫିକ ଷ୍ଟଡିଟା ତମ ପାଠର ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁ ଏତେ ଗୁଡାକ ସମୟ ତାକୁ ନେଲିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଏଥନୋଗ୍ରାଫି ମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି। and in ethnographic study mostly it emphasizes its focus on qualitative research. रिसर्च पुणी दी प्रकार अछि, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। आमे जो एनालिसिस पढिले कोरिलेशन बोली जोटा कहली, दैट इज द टाइप ऑफ एनालिसिस टर्म। एनोवा, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, कोरिलेशन, आउरी मैनोवा, एंकोवा, कोरिलेशन रिग्रेशन, विभिन्न प्रकार सब एनालिसिस अछि। दीज ऑल आर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बट एज साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ mental processes, behavior and experiences, qualitative research is very important in psychology. So ethnographic study along with a little quantitative study, it majorly focuses on qualitative study. number रे विशेष नंबर का दुनिया नंबर का खेल नहीं है, दुनिया दिल का खेल है। क्वालिटेटिव स्टडी माने मो मन कौन कहूची, मु केमिति ताकू इंटरप्रेट करची, मु बहुत लिखिदेली मु 10 रु 10, बट मो मन कहूची नाई नहीं मते जो रेटिंग करिया पई कहिसंती मु 10 रु 1 देबी। मोर एक्सप्रेशन देखिकी एक जो एक्सपेरिमेंटल जान दबो जे अरे ये सिना 10 रु 10 ताकू रेटिंग दे देछि, किंतु यार मन कहू नाही जे ताकू 10 रु 10 माने आई एम अगेंस्ट डाउरी, मु 10 रु 10 लिखिदेली, किंतु मोर व्यवहार देखौछि जे नाई नाई मु डाउरीटा नेइथिले भलो हितंदा, तांको झियो आसीबो मो घरे रहिबो, मो सब धन संपत्ति खाइबो, सब करिवो, से से माने किछि देबेनी, झियोर कोन किछि अधिकार नाही। एई जो एक्सप्रेशन से होछि क्वालिटेटिव स्टडी। से जहाँ भी हो, ethnographic study is mainly qualitative study, and here the observer or the ethnographer, जे ethnographic study करूची, जे experiment करूची, से experimenter, जे ethnographic study करूची, से ethnographer। जेमती observation जे करूची, से observer। से होची जाईकी से कल्चर भितरे रहिबो। सो what is the ethnographic method, सेटा होची the ethnographer in culture, participate in a specific culture or rituals to study them. culture जोटा हमें पढ़िले गोटे पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन पढ़िले नि जेतिया से सांको भितरु जणे हे कि से कल्चर भितर एंटर करिवो, तापर रहिवो। तो केमिति से स्टडी करिवो, ही गैदर्स डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। सी जाई कि सेठी रही के ऑब्जर्व कला। वर्तमान धरंतु आपन को ग्रुप रे आई एम डूइंग ए स्टडी ऑन द स्टडी मेथड और पीपल्स सैटिस्फैक्शंस अबाउट द इग्नू सिलेबस, एया मु करू जानिया पई चाहूची। तो वर्तमान मु गोटे इंटरव्यू करिके आपन मान को पचारि परिबी, मु जाई के आपन माने जतरा क्लास रे बसी के पढुचंती, जोटा ऑफलाइन क्लास होतो सेठु भी देखि परिबी। मु आपन माने जानिबे जे ये जने जो ये के मैडम नहती, ये भी आम सहित एनरोल हेचंती, आ ये आसी के आम सहित बसी के परीक्षा देउचंती, आम सहित ये करचंती। सब पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन भी कहि परिया, किंतु गोटे कम्युनिटी भीतर जतरा एंटर करचंती आमे ताकू एथनोग्राफी स्टडी करके कहउछन। सो देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ कलेक्टिव इंटरव्यू थ्रू, ऑब्जर्वेशन थ्रू, कन्वर्सेशन। तापरे आमे एया भी करि परिबा जोटा मु पूरी मानकर बाहागर सिस्टम कहली, यू कैन कलेक्ट सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कलेक्ट सम ऑफ द बुक्स that describes about the marriage ritual, marriage function, marriage process of Puri Brahmins. It also different studying behavior in everyday context rather than experimental condition, using unstructured approach to gather data in early stages so that they can emerge gradually through analysis. Then comprising an in-depth study of one or two situations. मु जति बाहागर विषय जानिया पई कि चाहूची, तो मु एई प्रकार डेटा कलेक्ट कली। देन आई हैव टू बी देयर फ्रॉम द डे वन ऑफ द मैरिज रिचुअल मैरिज फंक्शन गोटे घंटार नुह, ता पूर्व 4 दिन पूर्व भी विभिन्न प्रकार झियो बाहागर 4-5 दिन पूर्व कि 10-15 दिन पूर्व होची ना नहीं बाहागर फंक्शन ता हुए केमती आरंभ होची,
ओडिया बाहाघर मैडम 15 दिन रु मासे पूर्व आरंभ हो जाउची जाई रगड़ा जाई रगड़ारू कौन आमे कहउछन जाई अनुकूल ना कौन ए पत्रिका पूजन हुए सेत्रु फास्ट इनविटेशन टा जगन्नाथ महाप्रभु को पाखरे दिया हबो तापरे मामू घर तापरे अलगा लोक तापरे स्टेप बाय स्टेप चाली चाली की झियर विदा हेई सारला परे अष्टमंगला को झियो पुनी फेरी जतरा आसीबो सेत जाए तापरे सेटा कोन हमर से जो जाई जो रगड़ा हेतिबो जो कोरोना ताकू बोधे डिस्प्लेस करा हबो बा साइड करा हबो कोन सेटा बोधे लास्ट होतो मु बाबू आगे हां सेटा तो केते लंबा प्रोसेस तो if I want to know the ritual, I want to know the process, I have to enter into their community before 15 to 20 days of the marriage or according to their statement about the inception of the function. एया होची हमरो जोटा ethnographic study रे करा कहि परिबा. So for I have to study their behavior in everyday context. कौन कौन सब जाई रगड़ा एटा सिना हमें कहि देले we know what is जाई रगड़ा गोटे टर्म माने सुनले हमें जानि देले हमको दरकार नै कि जाई रगड़ा माने कोन बोली कहि सात जन स्त्री लोक आथिबे से जो पूजा करा दिबो किंतु इफ आई एम एन आउटसाइडर मते तो एडा सब देखिया को पड़िबे ना सो आई हैव टू गो एंड ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग्स स्टेप बाय स्टेप तापर होची it should the ethnographic study should comprise of a in-depth study of one or two situations mu khali gotiye bahagar jai ki dekhi deli and I write I will start writing a thesis on this bahagar puri brahmins bahagar that is not advisable to know or to document the ritual marriage process of Puri Brahmin. I have to do an in-depth study of 2 to 4 marriage functions. जोटी मु देखिली अरे एठी भी छाया करछुंदी सेठी भी करछुंदी सेठी भी करछुंदी सेठी भी माने पुरी रे सारा ई गोटी जिंस ही फॉलो करूछंदी बंडा मानकर लाइफस्टाइल बंडा मानकर चाइल्ड बर्थ सिस्टम मु जानिया पई चाहूची तो मु एठी रही कि बंडा मानकु पचारि कि से माने कहि देबे बंडा ट्राइब्स कहिबेनी से माने तांकर जो चाइल्ड बर्थ को जानिया पई केतेटा कम्युनिटी अछि चाइल्ड बर्थ पाई कि से जो स्त्री लोकर जतरा एडवांस स्टेज हेई जीवो प्रेगनेंसी रो से स्त्री लोक गारू दूरर गोटे जागारे गोटे घर पर्टिकुलरली थिबो एंड द लेडी goes to that place with her husband and stays there till she gives birth to the child and she crosses the 7 or 12 days and then she returns back to the home. कहना से घर भितर रही कि छुआ जन्म करि परिबो नाही से कल्चर रे अछि से माने दूर को जिबा को पड़िबो ही पड़िबो हैना तो सेही प्रकार भी होउची सेटा को मु जानि भी जदी सेमिया कल्चर जानिया पई चाहिबी तो मु जाई कि जो घर रे से स्त्री लोक डेलीवरी दबो सेही पाखरे मु रही सेही को जाई कि रहिया पई आई हैव टू आस्क और हां कि जण प्रश्न पचारथिले कोहंदो हां मैडम गोटे क्वेश्चन थिला हां हां एथनोग्राफिक मेथड टा और ऑब्जर्वेशन मेथड टा बहुत टाइम टेकिंग बोली अज्यूम करा जाय परिबो एथनोग्राफिक टा बहुत टाइम टेकिंग सतरे आगे बट क्वालिटी सुपीरियर आछि से जोडे माने रिसर्च पाई गुटे लेडीज को हां गोटे रिसर्चर एथनोग्राफिक स्टडी पाई कि गोटे कम्युनिटी को गले जहा भी ट्राइबल कम्युनिटी को कोन तो से कम्युनिटी को एक्सेस नाही बाहर लोक जेमि हमर बंडा ट्राइब मानकर भीतर हमको एक्सेस नाही धरा जाय तो से जो रिसर्च जो एथनोग्राफर माने एंथ्रोपोलॉजिस्ट से माने यूजुअली हम एंथ्रोपोलॉजी रे से माने बेसी एथनोग्राफिक स्टडी को यूज करंती तो सीए कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन कले से कम्युनिटी रे जण को बाहा हेले बाहा हे कि सेठी रही गले सारा जीवन से कम्युनिटी रे रही गले से कम्युनिटी विषय पढ़िया जाई एई प्रकार भी हेछि आ ऑब्जर्वेशन मेथड भी टाइम ऑब्जर्वेशन इज ए यूनिवर्सल मेथड बोली कहि के हमें पढ़िबे एथनोग्राफी रे भी एक्सपेरिमेंट सबुथिरे ऑब्जर्वेशन यूज होछि आ सब बळे ऑब्जर्वेशन दा लेंदी टाइम टेकिंग एथनोग्राफिक वर्ष धरि के चालुथिबो अभी जदि इंटरेस्टेड जो माने से माने टिके देखि परिबे गूगल करी की सम फेमस एथनोग्राफिक स्टडी सेमिति आउ गोटे मोर होमवर्क आपण मानन पई होछि कि फेमस साइकोलॉजिकल रिसर्चेस और
सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्चेस टिके पढ़िला माने या भितर बहुत गुड़ा आमे ता विषय पढ़ी पढ़ी के जीवा एबे जोटा आमे पढ़िबानी कि ता भितर बहुत गुड़ा को पढ़ी पढ़ी के जीवा मु एक्सपेरिमेंटल मेथड टाको बहुत ब्रीफ कर देली ता काइना बाकी सब गुड़ा आमे एक्सपेरिमेंटल मेथड ही पढ़िबा से एक्सपेरिमेंटल मेथड रे आपण मानको बही रे लिखा है जे आमे जानिबा सपोज वी वांट टू नो the aggressive behavior among people those who are going to watch an aggressive movie एटा जानिबा पई कहि कि चाहउछंती आपन को बही रे दिया है से एग्जांपल टा सेठी पई तांकर नाम भी दिया गई छै कि सेटा करिथिले तो सिए कोन करले कोठी पढ़िथिले नै black and vivan होला पेज नंबर 56 रे लिखा है black and vivan करो he wanted to measure the tendency to engage in aggressive behavior under one of the four conditions सेट पे कि चारटा कंडीशन नेले सेथिरे केमिति से ये कले people who are waiting to watch an aggressive movie and people who are coming from the movie theater after watching an aggressive movie सेमानकर tendency to engage in aggressive behavior रे किछि डिफरेंस अछि कि चारटा ग्रुप ये दीटा ग्रुप हेले आउ दीटा ग्रुप हेले people who are waiting to watch a non aggressive movie and people who are coming from that theater after watching a non aggressive movie सेमानकु गोटे एग्रेशन रो क्वेश्चनर आउ सेमानकु दिया जिवो कि तमे एग्रेसिव बिहेवियर शो करो बोली कहि इज दैट पॉसिबल दैट इज अनएथिकल एक्चुअली सो सेटा को से कोन करिले गोटे क्वेश्चनर देई कि सेमानकु कहिले सेमानकर जो टेंडेंसी टू शो एग्रेशन को से रिकॉर्ड करिले so he found these two people black and vivan in 1992 they did this study and what they found people those who are waiting to see the violent movie had higher aggression score than those who were waiting to see the non-aggressive violent film hello जो माने aggressive film देखिबा पाई के टिकट करिसंती definitely semanko bhitere aggression is higher similarly those who had just seen this aggressive or violent film scored higher than those who had just seen non-violent film ए जो दीटा ग्रुप को वायलेंट और नॉन वायलेंट फिल्म देखिबार इच्छा थिबा लोक मानक भितरे किछि डिफरेंस अछि कि तांकर ये रे से याकू करी कि बाहर करथिले तो सेमतेर बहुत प्रकार मॉडल सोशल कोन हमर पर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग रो केमिति पिला ऑब्जर्वेशनल थ्रू दे लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन बांडुरांकर स्टडी आमे गोटे पढ़ी परिबा जो बोबोडर काली कहउथिली हमर सोशल साइकोलॉजी रो मिलग्राम करो जेलर को केमिति ये करथिले से सब जिंस भी पढ़ी परिबा नै अच्छा व्हाट आर द स्टेप्स इन एथनोग्राफिक मेथड what methods are used or how we proceed in ethnographic method it starts with selection of a culture as I said I selected Puri Brahmins and Puri Brahmins marriage function or marriage institution so I have to do some review of literature से कौन कौन ता ऊपर काम अछि किए आगुरु सतरे स्टडी करिसंती कि किए ता विषय किछि लेखि कि जाइसंती कि then I have to find out identify the variables मु काहा ऊपर स्टडी करिबी माने पर्टिकुलरली को जिंस ऊपर एई कल्चर रो स्टडी करिबी मु कहिबी जे पूरी ब्राह्मण कर बाहाकरटा then it goes about gaining entrance जोटा we have to take the permission of the community हमको समस्ते अलाउ कर देबेनी बंडा माने को भीतर को जिबा पई कि we have to take the permission of that से माने को सरपंच थिबे बा से माने करो कि ब्लॉक ऑफिसर थिबे तांको को हमको जाई कि परमिशन नेबा को पड़िबो which in turn sets the stage for cultural immersion of the ethnographer then it is not unusual for ethnographer to live in the culture
for months or even years. आपण मान मित्र जी एक प्रश्न पचारले जे it must be a time taking procedure or it must be a time taking method to do any type of research. Yes, that is true. The middle stage of the ethnographic method involves gaining informants, using them to gain yet more information on chaining process and gathering data in the form of observational transcript and interview recording. Then once we gather the information, once we record or once we record our observation, once we record the happenings, the procedures, everything, we start analyzing the data. ମୁଁ ଯେମିତିଆ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ମତେ 4-5ଟା ବାହାଘର ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ସବୁଗୁଡା ଦେଖିକି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛି ଆରେ ସବୁ ଏମାନେ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜରକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, that means ଦେୟା। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜର ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି there is some scientific reason or there is some reason behind following this procedure। ଆମର ଯୋଉ ବିରି ରଗଡାଟା ହଉଛି ବା ଜାଇ ରଗଡା ହଉଛି ସେଟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ପିଲେ? ବଡି ପଡି ଦିଆ ପୁରୁଣା ମାନେ ବୋଧେ ପୁରୁଣା ଜମାନାରେ ଯେମିତି ବାହାଘର ପାଇଁ ଆଗରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବାଟିକି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲୁ ତ ଏଟା ହଉଛି ବଡିଟା ଦବାଟା ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ବଡିଟା ଷ୍ଟୋର କରିକି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇ ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବଡିଟାକୁ ତିଆରି କରିକି ଝିଅକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜାଇ ରଗଡା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାପରଠୁ ପ୍ରୋସେସ ହଳଦୀ ଫଙ୍କସନ ଯୋଉଟା that is universal across all the states, all the cultures in India. Even ମୁଁ ଭାବୁଛି those who are Muslims here, they also must be following this हल्दी function। ଅଛି କି ଯୋଉ କି ଅଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ମୁସଲିମ୍ସ କି ସେମାନେ ବି କହିପାରିବେ? ହଳଦୀ ତ ଜାଣିନି ମ୍ୟାଡାମ, ତାଙ୍କର ମେହେନ୍ଦି ଅଛି। ମେହେନ୍ଦିଟା ଅଛି, ହଳଦୀ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାନି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଟା ମେହେନ୍ଦି ଅଛି ଅନ୍ୟ କଲଚରରେ, ନନ୍ ଓଡିଆ କଲଚରରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ଅଛି ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର? ଅଳତା। ଅଳତା ଆମେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଆସିଥିବ ସମସ୍ତେ ଅଳତା ସେଥିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯଦିଓ ମେହେନ୍ଦିର କନସେପ୍ଟଟା ନାହିଁ। ହଳଦୀଟା ଯୋଉ ଅଛି ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚରରେ ଅଛି। ତ ସେ ହଳଦୀ କଣ ପାଇଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାର ବି ଗୋଟେ ରିଜନ ଅଛି। ହେଲ୍ଥ ବ୍ୟୁଟି, ସ୍କିନ୍ ଟା ଗ୍ଲୋ କରିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି କିଛି ବି ସ୍କିନ୍ ର ଡିଜର୍ଡର ଯଦି ଥିବ, ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ वगैरह ଥିବ, ହଳଦୀ ବାଜିଲା ମାନେ ସିଏ ଆମେ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଫୋର ଗୋଇଂ ଟୁ ସମ୍ ଅଦର୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଇ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ ଟାକୁ ଟିକେ ୟୁଜ କରିଥିବ। ମୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରିଆନ ବାହାଘର ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଦେଖିଲି ଆମେ ହଳଦୀ ଲଗେଇକି ଗାଧେଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଳଦୀ ଲଗେଇକି ରହିଲେ। ଆଜି ହଳଦୀ ଇଭିନିଂ ରେ ଲଗେଇଲେ ତ ସେ ହଳଦୀ ଦେହରେ ଲାଗିକି ରହିଲା କାଲି ଯାଏ। କାଲି ସକାଳେ ଗାଧେଇଲା ପରେ ସେ ବହୁ ବେଶଭୂଷା ହେଲା, ତାପରେ ବାହା ହେଲା। ମ୍ୟାମ୍ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡେ ବି ହଳଦୀ ଲଗେଇକି ସେମାନେ ଗାଧାନ୍ତିନି, ହଳଦୀ ଲଗେଇ ସେ ହଳଦୀଟା ଯେମିତି ଦେହରେ ଥାଏ ଶୁଖିବା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ହଳଦୀଟା ଲଗେଇବା ଆମର ଖାଲି ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ତାର ବି ଗୋଟେ କଣ ହେଲ୍ଥ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଆମର ରିଚୁଆଲ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି। So this is ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କଲଚରକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ମୁଁ ଏଇ କେତେ ଗୁଡା ପଏଣ୍ଟକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିକି ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନରେ draw କରିପାରିବି। So what are the methods? Ethnography different types of ethnography ଅଛି। One is macro ethnography. As the name suggests, macro refers to a broader concept। ଧରା ଯାଉ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଙ୍କ ଉପରେ ଷ୍ଟଡି ହଉଛି বা ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚର ଉପରେ ଆମେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଫରେନର୍ସ they come to India, they stay here and they study the Indian culture। That can be called as macro ethnographic study। Micro ethnographic study, as I said, I have chosen only the Manda tribe, I have chosen the Puri Brahmins। Again, to be specific, I have chosen their marriage process। I have chosen the Puskara system that is prevalent in Odia culture, that is known as macro ethnographic study। Another one is ethnic perspective। Ethnic perspective usually refers to the way the members of a given culture perceive their world। We are perceiving our world। Most of us are Odias here and we are discussing about our culture, we are visualizing, we are discussing about our culture, that is known as ethnic culture। Whereas
Ethic refers to the study where the outsiders develop a perspective or study of a particular culture. The outsider's perspective about a particular culture is known as ethic. Then symbols in ethnographic study, different symbols are used. ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି ଯେ ପାଟ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବା କଥା କହିଲି ଯେ ନାହିଁ ପୁରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କେବେ ବି ଘାଗରା ଫାଗରା ବା ମଡର୍ନ ଏଇ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ତାପରେ କଣ ହଉଛି ଏବେ ଆଜିକାଲି ହଳଦୀ ସଙ୍ଗୀତ ମେହେନ୍ଦୀ ଢିଙ୍କି ବଗ ତାପରେ କଣ ବରମାଲା ଏମିତି ସବୁ କଣ ହଉନି କି କେବେ ବି ମତେ ଲାଗୁନି ଯୋଉମାନେ ପୁରୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସେମାନେ କେବେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ଫଲୋ କରୁଥିବେ। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଟକିଂ अबाउट ऑल द ब्राह्मण्स इन ओडिया। ପୁରୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ମାନେ ଯେହେତୁ ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ देयर कल्चर ସେମାନେ ଏଇ ସବୁକୁ କରୁନଥିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର କଳସଟାର ଏଇଆ ହିଁ ହେଇଥିବ। ବାହାଘର ବେଳକୁ ଯୋଉ ଜଣେ ଯାଏ ଦିଅ ମଙ୍ଗୁଳେଇବା ପାଇଁ ସିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ ହେଇକି ସିଏ ନିଜେ ଗୋଟେ ବୋହୁ ପରିଆ ଡ୍ରେସ ହେଇକି ଯାଏ ନା ନାହିଁ। These are all symbols. So these also can be studied under this ethnographic study. Then cultural ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧା ଶୈଳୀଟା ବି ଅଲଗା ଶାଢୀଟା ବି ପାଟ ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ଶାଢୀ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତିନି ଟିକେ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି ଆଉ ଗହଣା ବି ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଓଡିଆ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏତେ ପ୍ରକାର ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ। Yes, then cultural patterning, symbols cannot be studied in isolation. What a pattern ଅଛି culture ର or everything is related everything is studied in a holistic manner जोटा हमें cultural pattern बोली कहिକି हमें କହିପାରିବା। So this is what ethnography is. Then coming to the next method that is known as meta-analysis. Meta-analysis is also a method of studying social psychology. Meta-analysis say we actually take a particular topic. Say topic मैम गोटे क्वेश्चन हाँ मैम जो आपण नेशनल ज्योग्राफी रे जो डॉक्यूमेंट्री होची सेउडा एथनोग्राफिक मेथड को ethnographic study सेउडा ethnography आज्ञा निहाती भाବରେ ethnography ସେମାନେ ଯାଇକି ସେ କଲଚର ରେ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ରହିକି କିଛି ଦିନ ରହିକି ଏ ସବୁ ଗୁଡା ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ethnographic study କହିପାରିବା। आज्ञा थैंक यू। The meta analysis कौन आमे गोटे टॉपिक नौचंती से टॉपिक ऊपरे जेकोनोसी मेथड रे भी स्टडी होची we collect all those study and develop a particular pattern that is known as meta analytic study. Shortly we can say that meta emphasize on data of these all communities numbers. It includes numbers also statistical, that is. Meta analysis is the research of research studies. Yes. ଯେତେ ପ୍ରକାର researches ହେଇଛି ଗୋଟେ ଧରା ଯାଉ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହିଁ ନେଲେ ସେଟା ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେଇ ସବୁର କମ୍ପାଇଲେସନ ଯଦି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି that is known as meta analytic study. Meta analysis need not to go to the place. No, nothing is required. You can sit at your home. You simply go to Google Scholar. You already extract all the studies that has been done on a particular. Suppose I want to study aggression among youngsters or adolescents. This is not studying about any particular culture. Meta-analysis is there for all the type of subjects. It is not a particular. It is not. It doesn't mean that we can use meta-analysis for only this sociology or social psychology. For everything, we can do meta-analytic study. So I want to know the aggressive behavior among adolescents living in an urban area or adolescents living in a basti. So I will find out all the studies that have been done on adolescents living in basti. Then from there I will select the studies that are done on the aggression of the adolescent of basti children or
Yes. Then I will develop a particular pattern. So this is these are Meta. about different methods used in social psychology. The next we will discuss the last chapter. I have not prepared a PPT of that. So application of social psychology. So social psychology can be applied to areas where there are groups or where there are where people interact with others or where there is a interaction among people or interaction among groups. So there are different branches of psychology where social psychology can be applied. In your book, it's given population psychology, then health psychology, environmental psychology, then industrial organizational psychology, legal system and social psychology. In all these areas, social psychology can be applied. Even in our positive psychology also this can be used. In our educational psychology, social psychology can be used. Madam, one question. Ma'am, social psychology, counseling psychology and counseling psychology with special applied, उसमें difference क्या होता है मैडम? थोड़ा सा बताइए. Social psychology and counseling psychology is completely different. In social psychology, we study about the individual in a social situation. That much. Okay, ma'am. His thought, behavior, anything that happens in a social situation, or how the individual is influenced by any social situation, or how the individual influences any social situation. Yes. Okay. Counseling psychology is. Will you please share your number, madam? I will need further some guidance, ma'am. I cannot give me my number. I've given you my mail ID. You can contact me. Okay. I will just raise few questions on that. Okay, ma'am. You can contact me through my mail ID and I will give you my phone. Sure. I can understand. Yes, ma'am. Counseling is about counseling psychology is about counseling. How to counsel people who are under stress or under any type of mental pressure, which actually doesn't require any type of medication. If they require medication, they have to go to a psychiatrist. Clinical psychology, isn't it? But before going to a clinical psychologist or a psychiatrist, they for minor life problems, life stresses, life maladjustment problems, relationship adjustment problems, all these things, they can go to a counselor, they can go to a psychologist. That is about counseling psychology. Okay. Then, coming to population psychology. So now the population is a very big problem for any country. Population is growing exponentially. To explain how population grows exponentially, an example has been given in your book. ଏଥିରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି example ରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ Persian wazir Can you say the page number, ma'am, please? 70 number, so page number 70. ମୁଁ ଜାଣିନି whether you are having the same book I am having. But current trends in social psychology and ethical issues. Yes. Third page. So population psychology I found. So when he invented this, जो हमें कहते chessboard. So then the king got pleased and he said that I want to give some reward to you because you have invented this 64 वाला board रा ଗୋଟେ चौरस ଆମେ कौन कहते chessboard you have. तो से वजे कौन कहिले ठीक अछि मु बहुत लोभी नुह आ मते गोटे ग्रेन देबे for each जो स्क्वायर पाइंट.
नेक्स्ट स्क्वायर रे तार डबल करके देबे तार नेक्स्ट टारे तार डबल करके देबे जानि करले तो फर्स्ट 64 टा स्क्वायर अछि फर्स्ट स्क्वायर रे गोटिए ग्रेन दियंतु सेकंड टारे दुईटा थर्ड टारे चारिटा फोर्थ टारे 16 टा हैला एमिति स्क्वायर करी 2 to the power n 2 to the power n करी तो एई करी करी कि राजा कहले अरे ये कौन एते छोट जिंस मागुची गोटिए ग्रेन रु से आरंभ करूची बट जेतेबेले सरीला माने 64 स्क्वायर को गला को 74 बिलियन मैट्रिक टन रा ग्रेन्स एकाठी हेतिला एंड द king could not afford that much of grain हैला similarly our population is also increasing in that manner जणे दी जण कपल होचंती से माने आउ दीटा छुआ को जन्म दोचंती सेपटे दी जण चारि जण देले चारिटा छुआ को जन्म से चारटा छुआ जन्म से चारि जण आउ देले छुआ से मानकर फैमिली हैला को 16 जण हेले इन दिस वे द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग तो से जहाँ भी हो पॉपुलेशन इंक्रीज केमती होउची ता विषय एटा एग्जांपल दिया जायछि आवर कंसर्न इज हाउ सोशल साइकोलॉजी कैन बी यूज्ड here in this population psychology or how social psychology can be used to control crowding because this is a social behavior this is not an individual or increase in the population is because of a social behavior so here this can be used to know about how to control the population it can be used in health psychology health kona health psychology kona what is health mental health kona khali medical psychology health मोर voice सुनी पारछन्ते समस्ते and I'm Yes, not ma'am. asking medical psychology I'm Yes, asking ma'am. नहीं मैडम Yes, जदी madam. मैंने Yes, madam. हेल्थ साइकोलॉजी में केमती गुड हेल्थ रहइबो ता पई काना मेंटल कंडीशन what is health रे definition के कोइ परिबे कि हेल्थ फिट बॉडी एंड फिट माइंड coordination of World- mind and all body development all World development mental health and social well-being. social mental health जने all कहउछन्ती development जने नहीं जने के कहउछन्ती physical health, mental health, and social well-being. social well-being health not Health is a merely the answer state. Health good health is a state of physical mental and social well-being social not and not merely merely the absent of absence of any disease illness and deformity. So, simply absence of illness is not known as health. Health refers to a state or a condition where a person is physically healthy, मोर कौनसी प्रकार disease अच्छी, किंतु I have complete control over that. मोर धर diabetes अच्छी, but I control my diet, I am taking medicine, so I am physically healthy. I cannot say that I am unhealthy, I am healthy. I should be mentally healthy. A state where I am mentally healthy and I am socially healthy. ମୁଁ physically और mentally बहुत healthy, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପଡୁନି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଝଗଡା ଲାଗିଲି ୟାକୁ ଦେଖିଲେ jealousy କଲି ମାନେ ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ୟାକୁ ଦେଖିଲେ aggressive behavior ଦେଖେଇଲି ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ସ୍ନେହରେ ପ୍ରେମରେ ପୁରା ବୋଳ ହେଇକି ମୋର ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ମୋର ଯେତିକି ପଜିସନ ଅଛି ଦେଇଦେବି ମୁଁ ହେଲ୍ଦି ବୋଲି କହିପାରିବେ କି ଆପଣ And ma'am, fourth dimension is spirituality. Spiritual health. এই তিনটা ହେଇଗଲା ପରେ I should also be that doesn't mean religious health that is spiritual health spiritualism and religious is two completely different things so this one has been added subsequently so ମୁଁ physically healthy ଅଛି mentally healthy ଅଛି କିନ୍ତୁ socially ମୋର କାହା ସହିତ ପଡୁନି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଲା ମାନେ ମତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ମୋର ସୋଫାରେ ବସିଗଲା ମୋର ଘର ଭିତରକୁ ଚପଲ ଏଇଟା କଣ କହିବା ଆମେ ହେଲ୍ଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ବୋଲି କହିବା କି ଆମେ ୟାକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ so how to ମାନେ ହେଲ୍ଥ ସାଇକୋଲୋଜିରେ କାହିଁକି ସୋସିଆଲ ସାଇକୋଲୋଜିର ଦରକାର ଅଛି
हेल्थ साइकोलॉजी काई सोशल साइकोलॉजी दरकार अछि बिकॉज ସବୁ ଜିନିଷ society ରୁ related ଅଛି madam society ଯଦି ମାନେ interaction with the society and social people it gains affects our physical and mental condition because most of our health issues are because of the stress we experience in our life आजिकाली अच्छी कौन अच्छी हमर हलचा अच्छी ना डिप्थेरिया अच्छी ना स्मॉल पॉक्स अच्छी ये सब किछि नाही आजिकाली कौन कौन हमर हेल्थ इश्यूज कौन jealousy competition living standards stress, depression, इश्यूज कौन आजिकाली डायबिटीज diabetes, high BP, Cancer. Cancer. Or we can say any type of lifestyle diseases are the diseases of modern society. Acute diseases has been replaced by some chronic diseases which are because of the lifestyle we maintain. ये सब गुड़ा का कौन टाइम होची हमर जो लाइफस्टाइल पाइंकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल पाइंकी ये सब डिजीज गुड़ा का हमर एक्चुअली होची मैम आउ गोटे पॉइंट भी अछि ह्यूमन टू ह्यूमन ऑथेंटिक कनेक्शन नथिले नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन रहिबो सब बेले हां जदि हमरा जोटा कहिले कि सोशल वेलबीइंग बा सोशल हेल्थ बा जहा हमें कहिले स्टेट ऑफ सोशल वेलबीइंग सेटा होची से जहा कहिया कथा जे हमर जदि लोकन को सहित भलो इफ यू डोंट हैव अ गुड रिलेशन विथ पीपल अराउंड अस that also affects us negatively that affects our physical and mental health मु सोशल हेल्थ मोर जदि भलो ना फिजिकल मेंटल हेल्थ डेफिनेटली मोर खराब ही हबा से जो कहउचंती जे विभिन्न प्रकार फिजियोलॉजिकल चेंजेस बा नेगेटिव चेंजेस हबो से सब जिंस अच्छा ठीक अछि so most of the diseases are because of stress because we cannot cope with our friends because we cannot cope with this hectic lifestyle because we cannot cope with this environmental hazards ei सब पाइंकी हमर हेल्थ रो बहुत गुडाक असुविधा हे जाउची so health psychology also requires social psychology to study health psychology again some people or people with a particular personality they are more likely to face a particular type of health issue and ei bisare personality type and health bisare kei पढिसंती कि जानिसंती कि किछि किसी आइडिया अछि कि personality there are different types madam Bandura's attribution theory Bandura's attribution theory कौन माने तार कौन इतरे हेल्थ रे रिलेवेंट है health relevant नहीं wire relevant हां सेटा हमरा अछि जोटा attribution theory कर जाने पड़ले and discussing about how social psychology can be used in health psychology पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी वेरिएबल्स ना में कहि परिबा मैडम जने मोटा ओबेसिटी अछि बेले से टिके कंफर्टेबल फील करिबेनी दैट इज नॉट पर्सनालिटी अच्छा पर्सनालिटी होची अलगा जिंस एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हमें कहि परिबा ए टाइप पर्सनालिटी टाइप हम से केमिति ता एनवायरनमेंट को तार बिहेवियर शो करछि हां ठीक अछि क्या कहते किंतु पर्सनालिटी और डिजीजेस आर आल्सो हैविंग सम कोरिलेशन पीपल विथ टाइप हां इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी रे तो से रिप्रेस करिवे इमोशन टा मे बी फ्रीली बाहर शो करिवेनी सेति पई जदी तांकर डिजीज बिल्ड अप हबो ड्यू टू तो पर्सनालिटी ओसीपीडी हां ओसीपीडी पर्सनालिटी रे हमर ओसीडा सूची बाई रोग जोटा कहउछन्ते आउ परफेक्शनिस्ट माने भी सेमती ओवर एग्जैक्टली हमर माने साइकोलॉजिकल माने टर्म्स से कोना कि जहां पोजीशन थी जे केते प्रकार पर्सनालिटी लोक माने दे एक्सपीरियंस a particular type of disease जेमति हमें साइकोलॉजी हिसाब रे पढे
ଯଦି ଆମେ ଟାଇପ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଟାଇପ୍ ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी, टाइप सी पर्सनालिटी, आजकल टाइप डी पर्सनालिटी भी गोटे बाहरलानी। ट्रेट थ्योरी माने पर्सनालिटी को डिफरेंट ट्रेट को लेके आमे ए जोटा कहली एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, हाई ऑन ओपननेस, गोटे बिग फाइव पर्सनालिटी रो गोटे थ्योरी अछि, ताकू भी देखि परिबे। एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन देखि परिबे। न्यूरोटिक पर्सनालिटी बोली कहि भी देखि परिबे। एंग्जियस पर्सनालिटी भी, तो जो मैंने एंग्जियस पर्सनालिटी दे people having anxious personality, they experience a particular type of health issue. Type A personality, they are very prone to heart attack like thing. B मानकर कौन प्रकार नहीं, they are very easy going, they never take any tension for anything, they lead a very easy and happy life. सेमान को टाइम पाई किसी चिंता नहीं, डेरी हैला शीघ्र हैला सारी भी काम एटा अछि। ए टाइप माने दे आर ऑलवेज एंग्जियस, केमिति सारी भी काम केमिति टाइम हे गला कि मु करते। सेमानकर हेल्थ प्रॉब्लम गोटे प्रकार। सी टाइप मानकर केते माने कैंसर तो एमिति, तो एटा भी गोटे कर परिया। एई टेक्निक गोटे सोशल साइकोलॉजी रो केमते रिलेवेंट अछि। वन मोर थिंग इज अमे ऑल ऑफ अस नो दैट वी फील less ill, less stressed when we realize, when we perceive that there is a social support system for us. So this is known as perceived social system. भुवनेश्वर लोक माने टिके देह खराब हेले अस्थिर हेबे नाही। जो माने भुवनेश्वर ठू दूर रे रहउचंती, टिके देह खराब हेला माने तांकर एंजाइटी बहुत बेसी बढ़ी जीवो। काहे कि ना मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आर देयर इन भुवनेश्वर। से लोक माने भाबिबे कि हां आम पाखरे अछि, एक्सेसिबिलिटी अछि, आम भुवनेश्वर भितर एते हॉस्पिटल अछि, आमे कोठी को पळिछि। जे दूर रे रहउछि से केमति हॉस्पिटल को आछिबो, तार डेफिनेटली एंजाइटी ता हाई होइबो। यू ऑल कैन रिलेट टू दिस एग्जांपल व्हाट आई एम गिविंग। वन मोर थिंग, मो घरे जदि मु एकुटिया अछि धरा जाओ, देन if I am feeling a little upset, I will be more anxious and that will aggravate my problem. काइना मु एकुटिया अछि, मते कोन हैला माने मु केमति काहा जणेबी, मु काले घरे मुछाई पड़ी जिबी कि ये जिबी कि मते केही एबे नाहंती। So this perceived social support is a protective factor for health. When people are around us, when resources is around us, when we have enough of accessibility to the resources, then yes. The next one is environmental psychology. Environmental psychology environmental psychology कौन? खाली हमें डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी रे एनवायरमेंटल साइकोलॉजी डिस्कस करना थी। कि जण कोहंतु अछंती तो किछि पिला भी समस्त से हेल्प करना है। किछि आईडिया अछि कोन एनवायरमेंटल साइकोलॉजी? नहीं मैडम। किछि नहीं मैडम बीइंग अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट नहीं अब अच्छा एनवायरनमेंट कोन आपण जानि छथि? I mean, we can, in simple terms, we can say that application of the psychological principles to the study of environmental science. या को कह परिया। But actually, environment कहाँ को नहीं किया है? हमर जो physical environment माने कौन आपण बुझी चलती? एटा समस्त कहि परिबे? Surrounding, our surrounding. सराउंडिंग माने केमते? सराउंडिंग माने कोन? आपण माने मोर एबे सराउंडिंग रे अछंती दो वर्चुअली एनवायरमेंटल साइंस माने कोन? Everything that is that if affect us surrounding in our surrounding, that will directly or indirectly is a part of environment, living things or non-living. मैडम प्राकृतिक पारिपार्श्विक परिस्थिति गुड़ा प्राकृतिक पारिपार्श्विक परिस्थिति वर्तमान कोन को जाने त कहले को ट्रांसफर हां कोन एनवायरमेंट हमरो चारि पाखरे थिता वायु जल बा एनवायरमेंटल साइकोलॉजी माने
परिवेश हमर एनवायरमेंट माने कोन तार सिंपल मीनिंग इज परिवेश है ना Madam, the material and non-material things surround us. The living and non-living things that surrounds us is known as environment. So ଆମେ ତାକୁ ଏଗୁଡାକୁ କହିପାରିବା nowadays the environment is getting degraded day by day. How it is getting degraded? कौन आमर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गलानी आमर कौन सब हेलानी एनवायरमेंट रे केते कौन सब ए सब बहुत गुडा आपण मानु कहिले माने घंटा पर्यंत आपण माने समस्त कहि परिबे मु जहा बाबूजी नॉइज पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन नॉइज एयर पॉल्यूशन होची तापर ग्लोबल वार्मिंग होची फूड शॉर्टेज होची फूड एडल्टरेशन होची एडल्टरेशन होची और कौन तो सब यानी गहड़ी समझते पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ुची nobody wants to, if you are confused, nobody will guide you for the road or heavy traffic bhi hochi. So these are all the environmental issues we are facing now. Samaste ethre agree karibe. So who is making all these things? Ye kala हमें माने ही करूछु noise pollution jaha kohunti we the people. noise kona कहले crowding होची heavy traffic jam होची air pollution एरा किए करिला एलियन माने हम मानकर आमे माने आमे कोन चारियाडे एंती घरे सिना आमे अगरबत्ती लगी बुलुछन आमे चारियाडे कोन धुआ करी बुलुछन कि हम जो गाड़ी चलाउछे गाड़ी जरी धुआ बाउछे गाड़ी चलाउछन्ती आमे जो टेक्नोलॉजी यूज करछन्ती दैट इज एक्चुअली एडवर्सली अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट ना नहीं गोटिए सेंटेंस रे होची द वे वी आर बिहेविंग the way we are least concerned about the environment that is degrading the environment है नहीं yes ma'am yes ma'am how this can be said we know that we are एबे आमे समस्त समस्वर रे 20 जन 25 जन लोक समस्वर रे कहउचंदी जे actually we are harming the environment we are polluting the environment we are the cause of all these things. Then why are we not getting aware? Why we are not getting cautious? And why we are into all these things? Why we are indulging in environmental degrading behavior? हमें कहीं के एवढा सब करूचंती. So, though we know all these things, we simply engage in all this behavior that can be explained by these theories, these general principles of social psychology. हमें तो यार theories गोटे theories गुड़ा गोटे गोटे पढ़िबा देखिबा जे why actually we are indulging in all these things and what can be done, how to motivate people, how to encourage people. आजिकाली मु भाबुची ए दिखरे जो माने भुवनेश्वर रे थिबे all of must have started segregating the dustbins or our household waste. yes ma'am dry waste wet waste बहुत जन या भितरु के बहुत कम जन ड्राई वेस्ट आ कोन वेट वेस्ट करू नथिबे मैक्सिमम आमे 20 जन भितरु एटलीस्ट 10 जन ताकू सेग्रीगेट करूथिबे मु भाबुची वी आर गेटिंग कॉन्शियस काहे कि बीएमसी ताकू आरंभ कर देला लगेबा पई कि गोटे मोटिवेटर गोटे रीइंफोर्सर गोटे अवार्ड गोटे रिवार्ड गोटे रिकॉग्निशन देला जे एई फैमिली रु एई सोसाइटी रु एई अपार्टमेंट रु लोक माने ड्राई आ वेट वेस्ट को सेग्रीगेट करके दउछन दैट एनकरेजेस अस टू सो एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिहेवियर. सो केमिति एई जो व्यवहार हमें जो डिग्रेडिंग व्यवहार देखौछन ताको केमिति रिड्यूस करबा दैट कैन आल्सो बी डन बाय यूजिंग दिस वन हमरो एई then how would it we are all professionals, we work in any organization, we work in any industry, we work in any institution. So in any or while working with other people who I am a teacher, I say I am a very excellent teacher, very excellent teacher. I can talk on any topic. If you take my interview, I will get
20 out of 20 marks in any interview and I have a good qualification. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିବି ସାଇକୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେତେବେଳକୁ ମତେ ଏଇ କ୍ଲାସ ଦିଆହେଲେ ମୁଁ କହିବି ନା ମୁଁ ଏଇଟା ପଢେଇବିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ଏଇଟା ପଢେଇବି। ମତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିରିୟଡ ଦିଆହେଲା ମୁଁ କହିବି ନା ମୁଁ ପଢେଇ ପାରିବିନି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିରିୟଡରୁ ଆସିପାରିବିନି। ମତେ ଟାଇମ ଦିଆହେଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର 10ଟାରୁ 5ଟା, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ 10ଟାରୁ 5ଟା ଆସିବି। ମୁଁ ଆସିବି କ୍ଲାସ 10 ବି ମୁଁ ଯିବି। I will start showing all this behavior. ହେଲା ତ I cannot adjust with that organization. That organization will immediately throw me out of their area. ନା ନାହିଁ ତମକୁ ଆମେ ହାୟର କରିଛୁ ସର୍ଭିସ ଦେବା ପାଇଁ। So here also social psychology works or social psychology can be applied. I can be taught about the group dynamics. I can be taught about how to adjust with group, how to affiliate to a group, how to be a part of group, how to behave in a group. है ना? So social psychology ATB use hochi again. So one of you said that you are from legal background and you have done your LLB and and you are practicing lawyer and you have joined this course to know about people's psychology, but how psychology works in legal system. Are you there today? Kiye kali kahithile? So psychology actually is helpful in legal system. A legal system is based on the evidences. Legal system deals with the victims, the evidences to prove that the victim has been tortured, or legal system deals with the culprit or the criminal. Here also this social psychology works. And here the legal people also needs to know about social psychology. So this is how social psychology is applied in different areas or social psychology applications that is written. If you are getting a question on application of social psychology, you can write about these special branches where social psychology is used. You can also write about educational psychology. गोटे क्लास रे गोटे सब पिलांक आकरे गोटे पिला को जदी प्रेस करा जाए से पिला जते मूर्ख होई थाउ जते दुष्ट पिला होई थाउ he will feel his self esteem will grow. He will have a positive feeling about himself and he will start doing well in his exam. What a class of monitor to those who are in teaching profession, you all must be knowing that the most notorious child of the class should be given the responsibility to monitor the class. Why? Because he has the control over. First, we cannot rectify that notorious child if we give him the responsibility of controlling the other notorious children. चोरो को घर चाबी धरेइबा जेमितिया चोर को आमे घर चाबी धराइबा आमे कुहंती सेटा सबुठु बड़ मूर्खामी किंतु गोटे क्लास रे सबुठु नोटोरियस पिला को आपण जदी मॉनिटर करिवे he will definitely maintain discipline in the class. तो एजुकेशनल फील्ड रे केमिति जण को रीइंफोर्स करिकि केमिति जण को मोटिवेट करिकि केमिति जण पनिश करिकि केमिति ताकू आमे तार परफॉर्मेंस को बढ़ाई परिबा. जदि ग्रुप रे आपण माने समस्त जानिथिबे एजुकेशनल साइकोलॉजी विषय जदि आमे डिस्कस करछन व्हेन वी स्टडी इन ए ग्रुप देन आवर परफॉर्मेंस विल बी बेटर. आपण माने जो ग्रुप कहिले काली जे मोर सांग जणे रहि जाउछन मैडम आम भितर जणे लॉग आउट करि गले आ सी जॉइन करि पार नाहंती जेतले सी जानिबे जे आपण माने समस्त एते कंसर्न ताको पई कि जे व्यस्त होउचंती जे सी जॉइन करि पारु नाहंती सेटा तांको केमिति फीलिंग दबो तांको केमिति तांकर ए जो इग्नोर जो क्लास रे जॉइन करिचंती सेटा विषय रे सुनिबा पई से क्लास अटेंड करिया पई तांको मन रे केते इंटरेस्ट क्रिएट करथिबो से निजे ही वर्तमान कहि परिबे कि मो सांग माने एते व्यस्त हो जाइथिले दो यू आर ऑल नॉट ऑफ द सेम एज किंतु नाउ एज ए ग्रुप यू आर एज इफ ए पार्ट ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप यू आर ऑफ ए पर्टिकुलर एज
एई प्रकार आपण मानको फीलिंग हेतिबो एंड योर कंसर्न फॉर योर फ्रेंड्स 2 3 और 5 फ्रेंड्स हु कुड नॉट जॉइन अगेन से मानको पई कि आपण कंसर्न हाउ दैट मोटिवेट्स देम टू be more attentive to more attached to give more attention to MPC classes MAPC classes okay अब जी काली जॉइन करि पार नथले आपण मानको सांगोर माने जतला वरीड हेले सेटा सुनी कि आपण मानको भलो लागितले ना नाही मैडम बहुत भल लागला आपण मैडम माने मु निजे कल हां मैडम मु कल ऐड ही पेल नथली माने कटि जाय डिस्कनेक्ट हेतला ता पर मुतरे मु दी जण मोर संग कहितली ऐड करिया पे मते से आपन को रिक्वेस्ट करथले जाओ आपन को पाटर सुनी भारी खुशी लागला जाओ भविष्य से कहितबार ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କଣ ନାଁଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି କାଲି ସିଏ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଏତେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି ନାଁଟା କଣ ସିଏ ଇମିଡିଏଟଲି ମ୍ୟାଡମ ସିଏ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି କଣ କରିବା ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି କହିପାରିବେ ଯେ କାଲି ସିଏ କେତେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟୀମ୍ କୁ କେତେ ବଢିଯିବ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ସାଇକୋଲୋଜି ମାନେ କଣ ହଁ ଝିଅ यस मैडम ହଁ କିଏ ଜଣେ ଝିଅ କଣ କହୁଥିଲେ କୁହ ଅଛି अच्छा ठीक अच्छे so now coming to some of the ethical issues in social psychological research आमे जेहेतु मु जोटा कहली आमे आपण माने देखुथिबे जो बिग बॉस देखुचंती एई देखुचंती बिग बॉस नहीं नहीं नो मैम केही देखुचंती तो कि जने यस लिखिले यस मैम तो सोनू शिल्पा देखिले हो जहाँ भी जो माने देखु नांती से माने एबे दउची कि सोनू शिल्पा बिग नो बॉस मैम नो मैम शेष हो गलानी सरी गलानी हां अच्छा बिग बॉस रो जहाँ जो पुराना एपिसोड जदी देखुथिबे आपण माने देखिबे जे सेठी सोशल साइकोलॉजी केमिति काम करूची सेथिरे सेमानु को आउची यू हैव टू चूज द पर्सन whom you don't like whom you dislike the most से माने कोन नै कोन मु एबे देखुथिले ताकू गोटे रिंग सेठी हुक रे दे देले त जो लोक को दी चारटा मिलिलानी सेमजा डिसलाइक से केमिति होची सेटा छाड़ दियंतु आपण माने जो समस्त फेसबुक रे थिबे आज्ञा यस मैम फेसबुक रे आपण मानकु लाइक गोटे फोटोटा आपण देले फोटोटा देला पारे आपण मानक भितरु बहुत जन थिबे जो माने टिके इच्छा करथिबे जे मोर से फोटोटा को केतेटा लाइक मिलला टिके देखिबा ना नहीं यस मैम यस मैम we all want to be liked or we all want to be appreciated ସେଥିପାଇଁ while doing any type of social researches it becomes a very big problem जोटा मु डाउरी रे कथा कहली आमे डाउरी जे social issue ता विषय रे आमे अच्छा सेटा को छाड़ दियंतो आपण मानन भितर जाहर छुआ थिबो जो माने पेरेंट्स अछंती से माने आमे कहउछन छुआ ऊपर प्रेशर दबा कथा नुह किंतु आमे माने कोन सत्तरे राजी हेचिबा जे मो छुआ माने एक्सेल ताकुटी पाटितुंड कले से निस भलो करिवो ना we will definitely try to put some pressure on our children to excel in his or her life though we propagate that mu बहुत भलो मु जने संथ मु तो होची आउ जने बाबा बा माता काईका मो छुआ को मु कोनोसी प्रकार प्रेशर दिए नै एटा सत्य की कोन नो टोटली नो केबे भी नो नो जदि एथि पई कि गोटे स्टडी करा जाए मु वर्तमान जो एथिकल इश्यूज कथा कहूची से एटा को नै कि आपण मानन को कहि माने एई एग्जांपल ता दो गोटे स्टडी करा जाए सोशल रिसर्च करा जाए गोटे स्टडी करा जाए और तो सोशल रिसर्च करा जाए जे हाउ मेनी मदर्स हाउ मेनी पेरेंट्स never put any pressure on their children or they don't put any type of academic pressure on their children मु कहबी आपण मु गोटे हमर रिसर्चर आसीबो मते गोटे क्वेश्चन आटे सिया मते जगी की बसले कि मु केतल प्रेशर देली न देली क्वेश्चन आटे दबो से नै कि मोटू मु सेटा को टिक मार्क करबी बा रेटिंग आपण माने जतला आगु को करबे देखिबे केमती रेटिंग स्केल रे हमें सब जिंस उडा को 5 पॉइंट रेटिंग स्केल रे सब क्वेश्चन उडा को हमें फिल अप करछंती सेटा देबो हमकु से देला को मु सबुथरे ना
I never put any pressure on my children. A question na, a question na. मो पिला मानक बिंदास छाड़ देछि तमे पढ़ले पढ़ न पढ़ले नाही मु तो एठी बसिकी तम पई रोसेवास करिकी तमान पाठशाठ पई चिंता करछि किंतु तमे किछि करनी मु एया ही मो छुआ को कहछि आमे समस्ते यूए रे रेस्पोंड करिबा ना नाही ना समस्ते आपण माने लिखिबे ना ना मो छुआ को प्रेशर दउछि बोली कहि रेस्पोंड करिवे कि केली समस्ते सोशल डिजायर को आमे समस्ते कहि ना ना मु कहछि बेस्ट पेरेंट मु मो पुला को प्रेशर दउनी so that actually creates a problem on the findings of the research एइथरे आपण मानकर बही रे गोटे सेमिया एग्जांपल दिया जायछि जते बेले टस्की अल्बामा रा 399 पुअर सेमी लिटरेट अफ्रिकान अमेरिकान आपण माने जानिथिबे अमेरिका रे जो अफ्रिकान गुड़ाक रहुथिले सेमानकर को प्रकार कंडीशन सब थिला बोली कहिछि तो गोटे स्टडी हेतिला जोथिरे कि एई मान एई जो सेमी लिटरेट अफ्रिकान अमेरिकान मानकर दे हैड सिफिलिस बोली गोटे रोग जोटा कि प्रोग्रेसिव डिजीज धीरे धीरे द पर्सन में डाई आउट ऑफ दैट सिफिलिस तो सेमाने जानिबा पई स्टडी रे इच्छा करूथिले जे सिफिलिस ता केते दूर पर्यंत केते एक्सटेंड पर्यंत फाटल होई परिबो तार नेक्स्ट स्टेज कोन ता नेक्स्ट स्टेज कोन ता नेक्स्ट स्टेज एटा न जानिले हमें ट्रीटमेंट करबाटा डिफिकल्ट हमना नाही और सेठी पई कि गोटे कम्युनिटी थाने ताको गिनी पिक करके नै जाउछंती हम इंडिया रे बहुत गुडा ड्रग बैन करा जायति बहुत ड्रग अर्थ कोन मु ये ड्रग विषय रे कहूनी मेडिसिन गुडा बहुत गुडा मेडिसिन बैन करा हेछि काइना से गुडा को जाना पड़िला जे that are being used on us to test the efficacy of those drugs that those drugs are actually harmful माने थर्ड वर्ल्ड कंट्री रो लोक मानक ऊपर यूजुअली एगुडा सब करा जाय सेमती एई मानक ऊपर से टेस्ट करा गला जे सिफिलिस ता केते दूर बड़ी जाउची देखिला and though they were given some medicines actually those were not preventive or those were not a part of the treatment to control syphilis simply they were given some placebo they thought that they are being treated but actually they were not treated eta hochi gote social research ba health research boli कहते से टाइम को कहली के हाउ सोशल साइकोलॉजी इज यूज्ड इन हेल्थ साइकोलॉजी से माननको मेडिसिन दिया गला सेही समय पेनिसिलिन का इन्वेंट हेई सारी थिला बट दे वर नॉट गिवन पेनिसिलिन because they were not literate people they never knew about the new drugs that are there or new vaccines that are there to deal with these type of diseases तो सेमाननको मेडिसिन दिया गलानी सेमाननको देखा गला जे कोन होउची सिफिलिस so here the experimenter used deception ठके कि तांको ऊपर एक्सपेरिमेंट कले जे से विषय रे जानिबा पाई सेमाननको अंधार रे रखा गला जे ए विषय रे जानिबा पाई जेमति मु आपण माननको पचारली जे हमकु जदि दिया जिवो क्वेश्चन आमे सब भल्लो बेस्ट मदर बेस्ट फादर बोली आमे देखेबा unless until deception is used we are likely to respond in a socially desirable way सेटा अलगा एटा सोशली डिजायरेबल वे रे हमें रेस्पोंड कर देवाटा हार्मफुल नुह किंतु कोनोसी वैलिड रिजल्ट बाहर परिबनी बट इन केस ऑफ दिस हेल्थ रिसर्च सेटा केते हार्मफुल हबो मनुष्य पाइकी सो वन ऑफ द एथिकल इश्यूज इन एनी सोशल रिसर्च इज डिसेप्शन द डिसेप्शन माने कोन ठकी की करिया लुचै की करबा बा छळना हमें कहि परिबा तो डिसेप्शन को यूज करा जाउची सोशल रिसर्च जोडा कि अनएथिकल एथिकल इश्यूज विषय हमें पढुचंती दिस इज एक्चुअली unethical the subjects the samples are not made aware about the purpose of the experiment their life is put into risk to do such type of experiment तो एथिरे देखा हिची विभिन्न प्रकार डिसेप्शन विषय रे इम्प्लिसिट डिसेप्शन भी होई पारे when the actual situation is so different from what the subject expect that they behave under incorrect assumption एटा एबे जोटा हमें कहिले सेटा होची
actual deception. Then technical deception occurs when the equipment and procedure in the experiment are misrepresented. आमको जतरा वैक्सीन एठी दिया गला आमे समस्त वैक्सीन नहीं थिबे बोधे कोविशील्ड कोवैक्सीन आमे जानि छन्ते आमे कोविशील्ड नेले ना कोवैक्सीन नेले कि सेटा पढिले कि आमे केही भी आमे पढि नाहंती सेटा कोनटा नोथिले कोनटा नाही आमे किछि भी जानि नाहंती आमको कोहाला वैक्सीन दिया होची तमे जदि वैक्सीन we might be a part of or we might be a subject of that experiment सेटा को आमे कहउचंती डिसेप्शन एटा होची सोशल साइकोलॉजी रो गोटे बड़ ये then another ethical consideration in any सबुठु बड़ होची ethical dilemma होची deception जोथिरे कि आमे सब्जेक्ट को जणाउ नाहंती द पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट and we are doing some type of harm to the subject without mentioning the true purpose of the experiment सेठी पई कि कोन कोन करा जाय usually how to deal with the ethical issues सेठी पई कि informed consent निया जाय मु जदी गोटे experiment रो part I am a subject I am a sample of that study then I am a participant I am जे कोनोसी term use कर परबा I am a participant of that study I am a sample of that study or I am a subject I should be made aware about the purpose of the study and I should give my consent. I should have a free hand to give my consent for the study that I agree to be a part of the study. Then एरा सब अच्छी आपण मान को बही रे जो मान को पाखे बहीटा अछि से मान के खुली खुली भी देखि परिबे then debriefing आ गोटे once the study मु जतरा consent देबी then only that study can be done on me or I can be participant for that study unless until I give my consent for the study I should not be forced to be a part of the study ताहले ethical ऐसे study टा ethically ठीक अछि बोली आमे कहि परिबा ethically correct ethical guidelines को follow करछि बोली कहि परिबा the next one is debriefing is once the study is done I should be given a brief idea about what have been done with me what are the results what are the findings or how I have responded to the study I should be briefed a bit about the study once the data is collected on me then minimum risk the minimum risk अर्थ इथिरे मु जहा कहिली से जो सिप्लिस पेशेंट माने को ऊपर करा आइतिला से माने हाई रिस्क रे थिले से मानकर लाइफ रो कोनोसी वैल्यू नथिला से माने को ऊपर एक्सपेरिमेंट करा गला से माने आउ सा भितर बहुत जण मरि भी गले काइना से माने को कोनोसी प्रकार ट्रीटमेंट दिया जाउनी किंतु से माने को कुहा जाउचे ट्रीटमेंट इज गिवन डिसेप्शन तांको सहित होइथिला सेथिरे ए जो रिस्क जो मिनिमम रिस्क कथा कहूची मैक्सिमम रिस्क थिला से मानकर लाइफ ऊपर रिस्क थिला से मानकर हेल्थ ऊपर रिस्क थिला लाइफ और हेल्थ रिस्क सहित मेंटल हेल्थ रो भी गोटे जिंस रहिछि when we are doing any study we should take into consideration the mental health of the participant सी जो मेंटल स्टेट रे आसीथिला से सेही मेंटल सेति की हैप्पी हेल्दी और कॉन्फिडेंट हे जिवो आमे से टेस्ट द्वारा तार मेंटली मोरली ताकू डाउन कर परिबा नाही देयर शुड बी मिनिमम रिस्क फॉर द तो एटा भी सोशल कॉग्निशन एंड एट्रिब्यूशन थ्योरी टा आज आरंभ करी हलानी याको रही गला आपण मानक पाखरे समस्त पाखरे बही अछि Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes. सोशल एट्रिब्यूशन जहार नाही से माने एमती देखिबे बोधे अछि ऑनलाइन अवेलेबल मु भाबुची अच्छी मैडम समस्त टिके देखिबे ए गोटे यूनिट टाकू देखि देथिबे काली ना नाही बोधे मंडे आउरे हमर अछि बहुत उडा तो जिंस रहला नि एटा फास्ट मु आम पिला माने जेंति पढुची ए हिसाब रे चलैछि बोधे सो ओके tomorrow we will discuss about person perception and social cognition person perception is how we perceive others and how we perceive ourselves also and social cognition माने कोन cognition माने कोन cognition refers to the mental processes हैला so how the information processing about some people takes place within us the process of analyzing the information is social cognition
ସେଇଥିପାଇଁ କି ଦି ପ୍ରକାର ମେଥଡ୍ସ ୟୁଜ ହଉଛି କଗ୍ନିଟିଭ ଆଲଜେବ୍ରା ଆଡିଟିଭ ଆଲଜେବ୍ରା ପର୍ସନ ପରସେପ୍ସନ ପାଇଁ କି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟଡିଟେ ଦେଇଛି କେଲିଙ୍କର କି କଣ ସେଇଟାକୁ ବି ଦେଖିବେ ଏଣ୍ଡ ହାଉ वी ଫର୍ମ ଇମ୍ପ୍ରେସନ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଆମେ ଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଯାହା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରାଇମେସି ଇଫେକ୍ଟ କଣ recency effect କଣ which effect is more whether primacy is more powerful or recency is more powerful if recency is more powerful in which conditions याकु विषय में पढ़िबा then we will discuss what is attribution माने कौन attribution ର ଅର୍ଥଟା କଣ ଗୁଣାବଳୀ ମୁଡ attribute माने गुणावली attribution why of any behavior है ना मैडम एटा again काहे ହେଲା याकु तो कारण आमे जो असाइन करूचंती दैट इज नोन एज एट्रिब्यूशन आपण एट्रिब्यूशन रो अर्थटा को बुझिबे आ causes कॉज बिहाइंड एनीबॉडीज बिहेवियर तो कॉज टा को आमे काहा को एट्रिब्यूट करचंती जो मु एमिति बिहेव करली मु एबे भलरे कथा होची मु हटात चिडी गली धर ता भीतर आपण मानकर काहार गोटे रेस्पॉन्स मते एते चिडी लागि थिवो जे आई स्टार्टेड बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे so we can attribute that my change in behavior is because of x response to me आमे जो cause assign करछन that is known as attribution से attribution तार कोन कोन theories अछि situational dispositional cause भी हे पारे से केमती कोवेरिएशन प्रिंसिपल्स को फॉलो करूची आ ए जो फ्रॉम सिचुएशन टू डिस्पोजिशन ता विषय रे तापरे आमे कोन कोन यूजुअली एरर्स करू एट्रिब्यूशन रे हेलो हां ठीक मु जान जानी हां परे कथा मु कथा तो what are the errors in attribution attribution error कोन बोली बुझी पाछंती एटा जहां लेखा है कि आपण ताकू छाडंतो आपण हमर रियल लाइफ रे उडा सब कोन होउची ताकू बुझी पाछंती कि नहीं फंडामेंटल एट्रिब्यूशन एरर हेलो इफेक्ट एटा जानुचंती नहीं हेलो इफेक्ट जानि पाछंती किछि नहीं मैडम पढ़िबो को पड़िबो मैडम हेलो इफेक्ट माने जणे गोटे बेरे बिहेव कले अज्यूम करिया कि से सब बेले सेमती कंसिस्टेंटली बिहेव माने सेटा सिंपल वर्ड रे हमें कहि परिबा जे द फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग हमें एटा यूज करूछन ना नहीं समस्ते ई सेंटेंस सहित अवगत थिबे Yes. Yes, ma'am. दैट इज सिंपली हेलो आमे प्रथम थर रे जहा को जो प्रकार देखिले प्रथम थर देखि कि जो इंप्रेशन डेवलप कले we usually continue that impression because in this chapter we will be discussing about impression formation तो एटा गोटे एरर ना नाही प्रथम थर मु देखला से बहुत हाँ, खुशी बहुत खुशमिजाज थिला सेति में नाम सीए एमडी हे नथि मु तो ताको सेतर देखला से सेमति ना तू गोटे भूल कथा कहू मु एथिरे भूल करूची एक्चुअली दिस इज एरर इन एट्रिब्यूशन तापरे अन्य एरर गुडा को भी हमें काहे की करूचंती पॉजिटिविटी बायस जोकु लुकिंग फॉर गुड इन अदर्स आम माने मनीष आम सब बेले वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट गुड इन अदर्स से जो लुकिंग फॉर गुड इन अदर्स सेटा को कंडीशन रे होची ता विषय रे भी हमें ठीक पढिबा हाउ एट्रिब्यूशन कैन बी अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन सेटा को आ बिके ये करिया तापरे सोशल कंपैरिजन हेका कोन अछि एउडा को देखिबा ता छना मु भाबुची ग्रुप रो किछिटा बा कोठिर मु ए मने पके पानी कोन कोन रो रखिची मु एथि पर्यंत जेहेतु आज प्रिपेयर करथली टिके आपन माने धैर्य धरि कि रहिबे मु आ टिके टिके देखै देबी से हिसाब रे आपन माने पढिले पढिला अर्थ टिके टिके देखि देइथिले यूनिट कोन एटा हमें कहउचंती ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 रे आपण माने देखंतु आपण माने एग्रेशन वायलेंस इंटरपर्सनल अट्रैक्शन प्रो सोशल बिहेवियर ए सब अछि बदे Yes, ma'am. अछि Yes, ma'am. ता भीतरु भी से गुडा करू भी किछि किछि देखिथिलु मु जहा भी पढी भी
aggression violence nature and types of aggression measurement जदि टिके पढ़ी देइथे मते टिके कहि देला माने मु आगे गला बेलको ताको आमे कवर करी करी पळै दिबा बहुत उडा ओके समय मैम से टिके देखिथन aggression violence काई ना पढ़ी हबनी सब गुडा ना जति गुडा मु करिछि एटलीस्ट सेइति पई कि आपण माने सरै दियंतु सेति पर्सन नेचर एंड टाइप ऑफ एग्रेशन मेजरमेंट ऑफ एग्रेशन कॉजेस ऑफ एग्रेशन तार कॉजेस रे हमें न्यूरो न्यूरो अछि कि सोशल कॉग्निशन एट्रिब्यूशन थ्योरी एट्रिब्यूशन थ्योरी 1 रे यूनिट 4 ब्लॉक 1 यूनिट 2 होची सोशल एट्रिब्यूशन थ्योरी अच्छा काइंडली समस्त टिके निजर बही जार बही नाही जेमति देखुचंती बा जेमति पढिबे बोली भाबिचंती ताको टिके उल्टे की देखि दियंतु टिके टाइम घंटे आधा घंटा टाइम एई 4 दिन देई दियंतु जदि पूरा परीक्षा पाइन कि आपण मानकर पढ़ा हेछि सुविधा रे आ मु जो पढौछि भी मते लागिबो जे आपण माने समस्ते बुझी गले माने मोर मते भी सैटिस्फाइड लागिबो जे पिला माने किछिटा बेनिफिटेड हेले प्रैक्टिकल एग्जांपल कहा आपण कहउचंती मने रहूची मैडम काई एटा लाइफ रो रिलेट करूची तो हां तो टिके जदि देखि देबे थ्योरीज गुडा को बा जहा पाटे समस्त सुनुचंती त हाँ मैम देखी कैसे यस मैडम यस मैम देखि देले मु तो इथु किछि एटा को ऑन करछि तो मु इथु जानि पारुनी किछि माने किए देखुचंती किए माने रेस्पोंड कोन आपण माने करचंती कि जानि पारुनी तो तथापि मु एटा जा देखि टिके देखि दियंतु जो कॉजेस ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर हमें बायोलॉजिकल एटा होची बायोलॉजिकल कॉज एटा होची साइकोसोशियल कॉजेस रियरिंग चाइल्ड जोटा को ताको हमें कहि परिबा एटा भी साइकोसोशियल कॉज कोटे हे परिबो डिफिकल्टीज विथ हमें काहे कि एग्रेसिव बिहेवियर देखौचंती बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस थिंग्स मोर पेरेंट ही एग्रेसिव सो आई विल स्टार्ट शोइंग this behavior predisposing child characteristics environmental stressors mu bhallo sabu prakare bhallo thili but the situations forced me to show aggressive behavior setting सब जानला पारे we will discuss about the theories of aggression एथरे देखंतु clinical classification अछि what is instrumental aggression hostile aggression proactive reactive aggression देखिले measurement causes गुडा को कोन एगुडा सब ब्रेन डिस्ट्रक्शन टेस्टोस्टेरोन एंड सेरोटोनिन रो केमति इंबैलेंस सब होची न्यूट्रिशनल ए सब को हम डिस्कस करबे मु खाली देखै दे पेरेंटल रियरिंग चाइल्ड माने हमर चाइल्डहुड रे द रियरिंग चाइल्ड वी हैव एक्सपीरियंस हैज a greater impact on the aggressive behavior we show then what are the different theories of aggression एगुडा ताकू भी टिके जदि आपण माने पढ़ी देथिबे मते टिके मु कहिला माने हिंट दे देले सरी जीव व्हाट इज साइकोडायनामिक थ्योरी फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी कॉग्निटिव न्यू एसोसिएशन थ्योरी सोशल लर्निंग थ्योरी दीज आर ऑल अबाउट दिस थिंग एटा भी डिस्कस करिवा इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कोन ताकू भी डिस्कस करिवा हमें एतपई जदि टिके ये करथिबे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कोन फिजिकल अट्रैक्शन कोन केमिति these things develop because of proximity similarity complementarity principles of what are the principles of similarity and complementarity how to explain interpersonal social these are the theories social action theory evolutionary theory देखि पारले समझते यस मैम मोर देखो कि खाली अपन माने कन्वर्ट हेतिबे बा जानि परिबे जारे ए सब हमर फिजिकल अट्रैक्टिवनेस प्रॉक्सिमिटी सिमिलरिटी कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल्स ऑफ हेलो त्या बदे मु पूरा करिनी कि कोन लागै कि अल्प टिके अछि ता जाओ ताकू भी देन व्हाट इज प्रो सोशल बिहेवियर ताकू भी पढिबा एटा मते आपण माने मागिबे नाही काहे कि ना एगुडा को जहा भी मु लिखिछि मु मो निजरु बाहर मनरु बाहर करनी कि अन्य कोनोसी कहिरु करिनि आपण मानकर जहा कोर्स हमें सेया ही डिस्कस करि परिबो तो मैडम मैडम गोटे कथा मैडम एटा बाकी देले बाकी हमहु आपण जो शॉर्ट नोट टाइप रो करछुंदी हमहु तो भलो होंदा टिके देले आपण जो शॉर्ट नोट जोटा आपण को ना सेटा आपण को बहिरु ही मो टिपिछि हां ठीक अछि मैडम सेति की बेले यथेष्ट नाम प्लीज एटा को यूजुअली जो पीपी गुडा तयारी करा जाय सेटा होछि पूरा आपण बहिरु
हम आपण बहिरु करचंते बट बहुत सिस्टमैटिक वे रे करचंते जोटा कि सुविधा हम पढ़िया को तो देले टिके भलो होता मैडम प्लीज जो माने इंटरेस्टेड है से माने स्क्रीनशॉट लेके रखी देले मैडम माने प्लीज एटा टू गिव प्लीज अनएथिकल एक्चुअली एटा पु पीपीटी टा दबाटा अनएथिकल मते लागे ताले मु सेही जिंस से आपण मानन को कहि ही दउची जे या डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर गोटे अछि आ अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर बोली गोटे अछि आपण माने देखंतु व्हाट इज केते जण देखि मते कहबे प्रो सोशल अल्ट्रिस्टिक कोन गोटे प्रो सोशल बोली गोटे अछि बिहेवियर गोटे अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर अछि जणे दि जण हाथ टेकिलेनी से माने कहिबे डिफरेंस बिटवीन एटा तो हाउ वी शो प्रो सोशल बिहेवियर माने कोन पिले किछि आइडिया अछि कहार भी प्रो सोशल बिहेवियर इज सिंपली helping behavior how we help others the behavior we show to help others without any expectation मु तो हेल्प करी माने मु भाबते मु हेल्प करी छी एटा आ मते से हेल्प करिवो दैट इज नॉट कॉल्ड प्रो सोशल बिहेवियर so what are the factors that affect this pro social behavior and theoretical perspective मैडम अल्ट्रुइज्म टा को कहउचंती कि प्रो सोशल it is similar altruistic thought pro social behavior altruistic behavior कौन डिफरेंस अछि सेटा खोजि कि मते कहिबे what are the factors that affect our pro-social behavior जी physically attractive जी आमरी जाति आमरी गोत्र आमरी ओडिया हेयला आपण माने जाइछन्ती बाहर स्टेट को देखिबे हमर ओडिया जने कथा कहया को आरंभ करदेला बहुत आपको खुश लागो स्टार्ट helping behavior there so these are the factors that influence our pro-social behavior याकू भी हमें पढ़िबा देखुचंती कि समस्ते ना देखु नांदी आ मैडम देखछु आउ कोन अछि ना नहीं मैम हां जो सार मैम क्लास करन से मन तो पीपीटी दे दियंती हमको No issue, ma'am. We have books. If we can go through the book properly, it is also an asset. You have whatever you taught is an asset. मु करी छी तो पहिले मत कोठी भी दबा पाएंगे चाहे देखो आ गोटे होची तमरा ये कोन concept of social influence crowd psychology kono crowd behavior kono theories of crowd behavior kono what is collective behavior है ना Yes, ma'am. एते गुडा को या भितरु पूरा कंप्लीट मु न करि थाई पारे इनकम्प्लीट भी रखि थाई पारे किंतु मैडम फर्दर केते बेले इनफॉर्मल क्लास गेटे नहीं जिवे इग्नू द्वारा न होई थिले भी आपण जदी फ्री थिबे तापरे आउटर नहीं हां हमें बुक कर देबा माने आपण मेल लिंक तो आपण शेयर करै चंती दैट्स फॉर वी आर ग्रेटफुल टू यू केते बेले आपण एई जो दी दिन सैटरडे संडे अछि समस्त जदी बही को थरोली पढिबा किछि दरकार नाही मु जेति की पोर्शन गुडा को पढेबी बोली कहूची से पोर्शन गुडा को एटलीस्ट देखि देइथिलु सेति की पाठ तक हेइ जाइबो यस माने मते टिके लागिबो जे जाऊ पिला माने किछि तो बेनिफिट पाइले मु ये करिवार मु मोर कहिबा कथा कहिबेली पिला माने गप सुनला परिया सुनि देले सरी गला हमर येटा किंतु परीक्षा बेले को किछि भी एमिति बेनिफिटेड हेलेनी जे ये मु जदी एटा देइ देली सरी गला आउ इंटरेस्ट रहिबनी जे मु कोन पढिबी कि नाही बोली कहू नहीं मैम एक्चुअली आपनका क्लास रे आपण इंटरेक्शन ता बहुत करू जंती स्ट्रांग वे रे तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन भी होउची तो भलो ही लागु क्लास में आउ कि खुशी हेबी मते एथरु किछि जिंस स्टोर हे जाई परिबो मन भितर स्टोर करिया ताई कि हमकु ता विषय रे आगुरु टिके जेमिति हमें पढिले रिसर्च स्टडी पूर्वरु लिटरेचर रिव्यू हमकु करिवा को जेमिति नाही जेमिति आगुरु गोटे प्रिपेयर्डनेस रहिथिबा दरकार मु पढे को कहिबी ग्रुप पढेबा को आरंभ करी ग्रुप तो कोन ग्रुप विषय कोन ओटे पाठ पढिबा किंतु ग्रुप विषय देखो केते जिंस अछि केमिति ग्रुप ता फॉर्म होउची तार फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कोन हां केमिति ग्रुप रो फॉर्मिंग होउची फॉर्मिंग स्टोरिंग नॉर्मिंग परफॉर्मिंग एडजर्निंग एउडा कोन कोन सब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन तापर थ्योरीज कोन सब अछि ता विषय रे साइकोलॉजी एते इंटरेस्टिंग टॉपिक
एटा पाठ करिया पढ़िला माने से बहुत औषधिया हेकि लागिवो याकु जदि टिके आमे ए भितर जानिबो बोली 10 rules that governs any group functioning कौन टाइप्स ऑफ ग्रुप अछि ग्रुप रो स्ट्रक्चर केमिति ता रोल ता स्टेटस जण मनिषर तार ग्रुप रो कोहेसिवनेस कोन ए सब एउडा भी वो पूरा कंप्लीट करिनी जे ये बोली जति की दरकार पड़िबो सेति की बोझे मु करिकी एगुड़ा को सब गुड़ा रही अच्छा तो टिके काइंडली समस्ते समस्ते टिके टिके प्रिपेयर हे जाइले हमको आ टिके सुविधा हबो ये कर देबा पई के नहीं समस्ते टिके टिके देखि देथिले जतरा आमे पढिबा सेगुडा सब हमको अचिन्हा लागिबनी आमे एटा चिन्ही चंदी आमे जानि चंदी बोली कहि कि लागि आ टिके थिए शीघ्र आमे ताको परसीव कर दे परिबा आमे शीघ्र ताको प्रोसेस कर दे परिबा आमे शीघ्र ताको स्टोर कर दे परिबा पूरा नुआ हितला लोको एटा कोन मैडम कहउचंती इंडिया प्रो सोशल बिहेवियर कोन हेल्पिंग बिहेवियर एटा कि अजीब अजीब जिनस उडा कहिया बोली कहि आ मते भी टिके अधिक एफर्ट दबा पड़छि मते भाबिबा को पड़छि जे लाइफ रो को सिचुएशन ताको सेट करके कहिले सेटा को आपण माने बुझी जाई परिया काहे सेटा त बही रे लेखा हेनी कि बा मु प्रिपेयर कला सेटा मुंडरे आसुनी तो मु इंटरैक्ट करिया को आरंभ करूछि मो मुंडरे सेटा आसी तो मु सेटा को एते एप्रोप्रिएट गोटे एग्जांपल ते भी देई परनी जे जोथरे कि आपण माने फटकी मैम एग्जांपल देगी बुझेले भी जिनसट बहुत रिलेट हे बनी मैम आपन को एग्जांपल्स कोडा ब्रिलियंट रो एक्चुअली सेटा बेसी हेल्पफुल होची मैम एग्जांपल गुड रिलेट करी बुझ भी जल्दी पूरा पिन पॉइंट देई पारि थेंती पूरा स्पेसिफिक करी मैडम गोटे रिक्वेस्ट आउ करिबी कि जदि टोटल उड़िया ही कि हम के इंग्लिश और हिंदी ऊपर फोकस करबा किछे सांग माने आइन करि पारु नारी जेतु से माने उड़िया बुझु नांती नहीं मु काली पर से पचारली जणे ही ता भितरु कहिले जणे ही एक्चुअली से माने मझी रे फ्रीक्वेंट क्लासेस जो उड़िया डोमिनेटिंग हैला से माने छाड़ी देले क्लास करबा कि हम गाइड करिया पे कहिबे समस्त को कहिबे श्योर मैम श्योर ओरियाटा बुझी पारना एग्जांपल टा आपण देला बेले को देखिबे जेहेतु गोटे नेचुरलिस्टिक कंडीशन को मनिष कम्युनिकेट इन इंग्लिश ईदर ऑन हिंदी दैट विल बी मच मोर बेनिफिटेबल हिंदी रे कहिबा पई कहि कि मु चेष्टा करिबे नले काना स्पॉन्टेनियसली से समय रे एग्जांपल टा देला पाठ त को इंग्लिश हे जाउची एटा कहला को ओडिया हे जाउची तो मु मैडम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम फ्रॉम ओडिया हाँ it is a national level university so a lot of people doesn't understand Odia ठीक अछि many more years so can I communicate राधा अग्रवाल आपण सेमान को कुहंतु जॉइन करिबा पई कि बेसी जदि असुविधा हुआ हेबो ताहाले एग्जांपल गुडा ओडिया मु सिखि जाइछि आ किंतु से माने सिखि पारि नाहंती ना समस्त सिखिबे सेमति किछि नाही माने हमें सेया एक्सपेक्ट करि परिबानी तो समस्त सिखिबे माने हमके लिखिबा तो इंग्लिश रे अछि तो मूलरो जदि हमर इंग्लिश हम मीडियम शुड ऑलवेज बी इन इंग्लिश हां इंग्लिश so while giving any example माने मोर जो स्पॉन्टेनिटी का रोज सेटा जोटा मोर मदर टंग से बाहरी आसुची तो से माने से जो एग्जांपल रो बेनिफिट का नहीं पारंती नेचुरली इट हैपेंस बट वी कैन मल्टीलिंगुअल हेला बिल्कुल चलिबो किंतु थ्रू आउट हेला बिल्कुल ठीक कंफ्यूज है ओडिया हे गला माने असुविधा है तो आपण कहि दियंती से माने जॉइन करिए एक्सक्यूज मी मैम ओके generously actually with pardon I want to suggest instead of से माने न पळे की रादर सही समय रे आउ थरे पचारले कोन कहले बोली भी चलंता रेजिंग all teachers doesn't interact as madam is doing they did not allow us to interfere in the session कोर्स रहि जाउनी कि माने हमहु जति गोटे कामटे दिया जाइछि हमर सब बेले गोटे रहिथो जे हमें मैक्सिमम कामटा केमति कर दबु yes so if they are interaction पाई कहि they are frequently using Odia ठीक अछि आपण से मान को कोहंतु जॉइन करिवे एग्जांपल टा ओडिया रे हेई गले भी से माने theory whatever there in the book they will get in English only से मान को विशेष 50% से माने बेनिफिटेड हेबे yes definitely ओडिया आपण हां जहा देखुथिबे जे
प्योरली ओडिया होनी 50-50 होची से 50% टा बेनिफिटेड हे जिवे आउ दुईटा तो क्लास अछि 4 आवर्स रो से 4 आवर्स रो से माने एटलीस्ट 1 आवर रो बेनिफिट पाइबे इंटरेक्शन हे पारे जदि आमे क्वांटिटेटिवली देखिबा आ क्वालिटेटिवली देखिबा जदि आपनकर कथाटा मु जतो एग्जांपल देला बेलकु जदि मन रखि मु स्पॉन्टेनिटी टाकू छाड़ी दे कि टिके अलर्ट हेती ताने मु आइदर इंग्लिश और हिंदी रे आई विल ट्राई टू गिव द एग्जांपल्स आ जदि आपन माने निजे ही आपन को तरफ कन्वर्सेशन आरंभ करिवे ताहले हमर से असुविधा गुडा को विशेष हबन सेते होगा मैम माने ये होता ही है लैंग्वेज टेंड्स टू प्रमोशन वन इफ अ पर्सन इज टॉकिंग इन इंग्लिश और हिंदी नेचुरली विल इग्नू जॉइन करछन they expect the medium of instruction should always be in English. With that expectation, they have joined this course. किंतु बेसी जन ओडिया हला बेलकु पुनी अगेन हियर कम्स सोशल साइकोलॉजी तो देखो एते जन ओडिया आई स्टार्ट यूजिंग माय मदर टंग आई फोकस on the majority. एक्सक्यूज मी मैम आ गोटे रिक्वेस्ट हला सीता डी काली कहिथिले जे मैडम मु नॉन ओडिया किंतु आई कैन अंडरस्टैंड ओडिया टू सम एक्सटेंट मो पई कि मैडम आ गोटे रिक्वेस्ट को मैडम आपण पीपीटी टा न दियंतु पछे हेले टिके सरीला परे सेशंस कोडा जदी क्वेश्चंस माने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे जदी टिके शेयर कर परंते पूरा सम्मान को कहिल रे पिले मते क्वेश्चन गुडा का सम्मान दियो क्वेश्चन पेपर्स आर अवेलेबल ऑन साइट मैडम माने मते आ खोजिया पई कि सेति कि तर नाही मु मोर डिपार्टमेंट काम सारी कि आसी कि मोर एक्चुअल टाइम हो 5:30 मु 5:30 पूर्वरु बाहरी आसी के एठी लॉगिन करी कि मोर माने मु 10 to 5:30 मोर वर्किंग आवर ठीक अछि मैम जतेले पढौचंती जो यूनिट कोडा को जंतु आपण जहा मु आज देखै देली कोन गुडा सब हमें मैक्सिमम सेति की जेति मोर पीपीटी अछि मु सेही हिसाब रे ही पढेइबी आगे आगे सेमती से खाली कहि देले टिके सुविधा हां माने सेइथु कोन क्वेश्चन हेई परिबो जोडा तमे पढिलो सेटा ता भी तो मु जति कोटा को छाडी देछि भी मते कहिला माने मु ता विषय आ टिके ब्रीफली डिस्कस करबी आगे मैम थैंक यू के तमानकर एफर्ट टिके दरकार यस सच में थैंक यू एई जो 4 आवर्स भितरे तमरो 50-60% पढा परीक्षा पैकी सारी देइथिबो त माने एटा पढिला बेलकु तुमको एते स्ट्रेस जेमती न होंता कल पढ़ के आएंगे मैडम पढ़ के आएंगे तो फिर ठीक रहेगा खाली देखि दियो पेपर बही उल्टे की खाली टिके देखि दियो कना बाकी उडा मु कहिबी यस हां ठीक है ओके थैंक यू मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम थैंक यू थैंक यू मैम